सार में उड़ चेहरा करो चेहरा ओम गं गणपते नमः ओम गं गुरुभ्यो नमः ओम सरस्वती नमः Dignitaries, respected guests, resource persons, delegates, participants, media personnel, and all the dignitaries present over here. On behalf of Odisha College of Education, Bhanjanagar, Ganjam, Odisha, I Dr. Dignitary and Professor happily welcome you to this one-day national seminar on implementation of national education policy and the vision of Viksit Bharat. History has been made in this institution because in 1 year we have successfully organized 2 national seminars, national events under the guidance of our dynamic principal, Professor Felicitation. 2 books and reading also. And on the outset, I welcome one and all Namaskar, Sir. Welcome, sir. इमती कवर नो चला इमती Patrol and guest of honor, Sri Siddhartha Padi sir, Regional Director of Brilliant Academician, Dynamic and Creator. We have with us Honorable Convener and Director of the Seminar, Assistant Principal Professor Bhanjanagar sir, Brilliant Scholar, Academician, Educationist and Dynamic and Creator. We have with us Assistant Guest of Honor, Professor Felicitation, Madam, former Principal, an icon of women empowerment. We have with us Assistant Chief Speaker of today's occasion, Professor Dr. Mehra sir, Head Department of Education, Regional Institute of Education, Bhubaneswar, one of the youngest professors and brilliant academicians. We have with us esteemed guest of honor, Sri Gopabandhu Mahapatra sir, Chairman, NEP Bhanjanagar, and who satisfies his name. We have with us esteemed guest of honor, Sri Narisabha Nayak sir, Chairperson, Bhanjanagar Block, one of the youngest representatives. We have with us esteemed guest of honor, Sri Prem Singh Kunal Books, New Delhi, and NEP Officer Ganjam, having young and energetic mind, so specifically. We have with us our esteemed guest of honor, Sarpanch Sri Sivaram Sahu sir, Lal Singh Gram Panchayat, Bhanjanagar, a notable and a popular figure. And last but not least, my dear young colleague, Dr. Satyavadi Martha, Assistant Professor Chemistry, Organized Secretary of this seminar. So I heartily welcome. मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध गणेश जी सरस्वती और भंजे के आगे प्रणाम करेंगे दीप प्रज्वलन करेंगे सदा करना Here it's and Subham Gurutvam Kalyanam Arogyam Dhanasampada Satrabuddhi Vinasaya Deepam Jyotir Namostute Deepam Jyotir Namostute
दीपं ज्योति परं ब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दनः दीपं ज्योति परं ब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं ज्ञानदीपो नमोस्तुते शुभं कुरुतं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदं शुभं कुरुतं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदं शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपं ज्योते नमोस्तुते दीपं ज्योते नमोस्तुते दीपं ज्योते नमोस्तुते दीपं ज्योते नमोस्तुते To stay the darkness life, we have gone we are in front of Goddess Saraswati, God Ganesh, and son of the soil, Bhaviswanath Upendra Ganjam. Tomoso Mam Jyotirgamaya, Tirmam Sungamaya, Asudo Mam Sattamaya, Mam Jyotirgamaya, Tirmam Sungamaya, Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudichyate, Purnasya Purnamadaya, Purnameva Vasishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. इतने बसरे हमें माँ सरस्वती प्रभु गणेश को पाकरा में दिखते लोग करी करते अनुरोध एडिटर ग्राफिक्स कितने लोग दिखते हैं सब एडिटर लोग इनको करना हम तो बता नहीं बोलते really proud moment, memorable moment, a pleasurable moment. It is historic moment for us because we are going to organize the one day national seminar. So, honorable chief guest of today's occasion, Sri Pradyumn Kumar Nayak sir, honorable MLA Bhanjanagar, son of the soil, sir, please come to dais. देखो पॉज करियो Honorable chief guest sir, Sri Pradyumn Kumar Nayak sir, honorable MLA, our esteemed guest of honor, Pramod Kumar Kutti sir, honorable ADM, Oliver Sabdapur, Ganjam, sir, please. Our esteemed patron and guest of honor, Dr. Siddharth Chandra Pani sir, Regional Director, Barampur. Our honorable convener and director of seminar, esteemed principal, Professor Dignitary sir. Our esteemed guest of honor, Professor Felicitation madam. Esteemed chief speaker, Professor Lakshmandar Behra sir. Esteemed guest of honor, Sri Gopabandhu Mahapatra sir. Esteemed guest of honor, Sri Narisabha Nayak sir. Esteemed guest of honor, Sri Prem Singh Vit sir. Esteemed guest of honor, Sarpal Sri Sivaram Sahu sir. And our organizing secretary, Dr. Satwani Mark. So now it is time to give bouquet and badges. As an honor, our students are going to give badge and bouquets. Santosh Nitavran, please come and put the badge and offer the bouquet to our honorable chief guest, Sri Pradyumn Kumar Nayak sir, honorable MLA Bhanjanagar. Shukriya, please come, and we are going to offer our bouquet and badge
to our esteemed guest of honor, Dr. Pramod Kumar Kushti sir, Honorable ADM, Collectorate, Chhatrapur, Ganjam. Mona Lisa, please come. We have to offer our flower bouquet and badge to esteemed patron and guest of honor, Dr. Siddharth Sankar Pahi sir, Regional Director of Education, Policy, please come and offer bouquet and badge to our Honorable Convener and Director of Seminar, Assistant Principal Professor Dignitary sir. Dignitary, please come and offer our bouquet and badge to esteemed guest of honor, Professor Sulekha Sundari Swami madam. Sonali, please come and offer bouquet and badge to our esteemed chief speaker of today's occasion, Professor Lakshmindra Behra sir. Krishna. Priyanka, please come, offer bouquet and badge to our esteemed guest of honor, Sri Gopalbandhu Mahapatra Chairman, NEP, Bhanjanagar. Santoshini, please come and offer bouquet and badge to esteemed guest of honor, Sri Narisama Nayak, Chairperson, Bhanjanagar. Sima Das, please come and offer bouquet and badge to our esteemed guest of honor, Sri Prem Singh Bis Tunal, New Delhi, and Editing Officer, Ganjam. Manjula, please come and offer bouquet and badge to esteemed guest of honor, Sarpanch Sri Sivaram Sahuji, Lal Singh, Gram Panchayat. And Saraswati, please come and offer bouquet and badge to our Organizing Secretary, Dr. Satyapati Mark. On the first slide, we have about our love offerings, bouquet and badge. Now time to welcome our guests, delegates, participants, honorable guests, everybody by singing a beautiful song, that is welcome song, to be sung by our student teachers Sumitra, Mona Lisa, Aparajita and Nirupama. Please go. Edit out. This
sum. Now I would like to request our principal Professor Vimal sir to preside over the meeting. उनके बारे में एक लाइन बोलना चाहता हूँ। उम्र थका नहीं सकते, ठोकरे गिरा नहीं सकते। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकते, अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकते। So on this occasion, I would like to request Professor Swai sir to give his welcome address. Sir, please, sir. प्रणाम। जय जगन्नाथ। Esteemed dignitaries and the dais and the house visit. It is a matter of great pleasure that this prestigious institution is organizing the second national seminar on implementation of national education policy 2020 and the vision of Viksit Bharat, particularly the second national seminar within a year. I welcome all the esteemed dignitaries, media persons, resource persons, principals of different teacher education institutions, participants, research scholars, students, dignitaries of regional directorate of education, other political leaders who particular to this national seminar. Friends, I will give a brief introduction of our esteemed guests. We have with us the dynamic leader, Honorable MLA Bhanjanagar, chief guest of this particularly national seminar, Dr. Pradyumna Kumar Naik sir, who has contributed substantially for development of Bhanjanagar. I welcome you, sir, to this prestigious institution. Sir was an advocate by professor before joining to this politics. Sir होते हम सुखर साथी आज जो इटा हॉस्पिटल इनॉग्रेट देची एटा मेजर कंट्रीब्यूशन होची सार तरफ जे लागी करी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कथा हो इटा पानी रो कथा हो बिल्डिंग कंडीशन कथा हो एपे सार सबुरे सहायता करते आ हमर जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट अछंती जो माने इंजीनियर्स अछंती आ ऑफिसर्स माने अछंती समाने एते सहयोग करछंती सार को स्वागत करछि नेशनल सेमिनार को और सार जड़े बहुत भल लोक जे भी हम सब बेले घरे रहती जेतबे हम सार पाखक जाइछु सार हम सब बेले सहायता करछंती सार को आपन स्वागत करछि नेशनल सेमिनार हमरो आउ जड़े डायनामिक एडमिनिस्ट्रेटर अछंती ये जड़े एजुकेशनिस्ट आउ डायनामिक एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर प्रमोद कुमार सर ADM General Collaborative Sector Ganjam. I welcome you, sir, to this prestigious institution. Sir started his career as an assistant professor in education. He served in different teacher education institutions and educational institute of the state. He was also assistant professor in Ganjam College of Education, Ganjam, Sikkim. Sir served in different capacities as video, district welfare officer, district project coordinator, deputy convener, and managing director, and he has served in different capacities and successfully he has guided 3 PhD scholars and he has written a number of books in the field of education. I welcome you, sir, to this presentation. We have another dynamic administrator and academician who needs no introduction. He is a regional director of education, Bharatpur, Dr. Siddhartha Shankar Padi sir. Sir, I welcome you, sir. Sir is a source of education and is always guiding us for the development of the institution. Sir was assistant professor in education, in Korea, in Keynote College. Now it has been converted into a university. He was a member of Odisha Sahitya Academy. He has completed his post-graduation from Bharatpur University and he has contributed substantially in the field of Korean literature. He has written a number of books
He has guided a number of PhD in the field of Indian literature, and any Odia program, literature program is there in the state of Odisha. He is always there. I welcome you, sir, particularly to this prestigious institution. We have with us Sri Bhaktabandhu Bhagwatra sir, who is our guest of honor, a dynamic leader, chairman of NEP, जे आम भंजनगर डेवलपमेंट सब काम कर जितेबाला आम सार पार्टी जाइए सार सब साहय डायनामिक लीडर सोशल वर्कर जे सब लोक काम कर असुविधा सुविधा सब आई वेलकम यू बैक टू दिस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन. वी हैव विथ अस अनदर डायनामिक लीडर ब्लॉक चेयरमैन भांजनगर डॉक्टर गणेश सभा नायक सर. आई वेलकम यू सर टू दिस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन. सर सब आम सहित अच्छा आम अनुष्ठान डेवलपमेंट सब काम कर. आई वेलकम यू सर टू दिस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन. आम सहित अच्छा एथिकार सरपंच श्री शिवराम साहू सर जे भी आम अनुष्ठान सब साहय कर स्वागत करी. आम सहित गोटे डायनामिक एडमिनिस्ट्रेटर एकाडेमिशियन अच्छा प्रोफेसर सुरेखा सुंदरी स्वाई who is retired as principal of Sonaba Autonomous College. She also served as Deputy Secretary Department of Higher Education, Government of Odisha. She has contributed substantially in the field of education. She has produced around 10 PhD scholars in education. She has written more than 30 books in Odia literature and education. Contributed substantially in the field of literature. She has received awards from all the Governor of Odisha and Honorable Chief Minister of Odisha because of her contribution to the field of K.S.U.B. I welcome you, Madam, to this prestigious institution. We have with us another dynamic academician, my elder brother, Professor Lakshmidhar Behera. He is Professor and Head Department of Education, Regional Institute of Education, NCRP, Bhubaneswar. He is involved in teaching, research, extension activities since last 25 years. He is a national figure, a national professor of education who has guided 10 PhD scholars and successfully completed 8 research projects in the field of education. He is a member of Board of Studies in different universities and members of the DRC in education in different universities. He has contributed around 100 research papers and articles, particularly in different journals of education. He is also the editor of a number of journals on education. I welcome you, sir, to this prestigious institution. We have with us the publisher, Mr. Prem Singh Bist, who is the guest of honor in this prestigious institution. He is the publisher of 2 reputed academic publishing houses. One is NEP Publications, New Delhi, another is Kunal Publication, New Delhi. He has published more than 1200 books in the field of education and other subjects. He has published 30 books of mine, particularly in the field of education. He has written textbooks. He has also published 8 national journals on education. I welcome you, sir, to this prestigious institution. We have with us Dr. Martha, who is the Organized Secretary of this prestigious institution. I welcome all the dignitaries who are sitting over here, Professor Behera, Professor Sethi, Professor Pradhan, other esteemed dignitaries of PWD, other departments, dignitaries who are sitting over here in the front benches, other headmasters of different high schools, other esteemed dignitaries, esteemed resource persons, dynamic scholars, my beloved students, to this prestigious institution. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir, for your beautiful welcome address. Matrudev Bhava, Pitrudev Bhava, Gurudev Bhava, Rashtradev Bhava, Atithidev Bhava. Now the time to felicitate our guests, time to felicitate, and a token of love from K.S.U.B. Bhanjanagar. First, I would like to request our principal, Professor Viksit Bharat sir, to felicitate chief guest of today's occasion, Honorable MLA Bhanjanagar, Pradhan Kumar Nayak sir. So now, our Honorable
MLA, Bhanjanagar, Pradeep Kumar Naik sir is going to be felicitated by our principal sir. So give a big hand please on behalf of the Dignitary. Now, time. না ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে পরপর দেখাও যেটা দেখো Now it is time পরপর to felicitate our esteemed guest of honor, ADM, Dr. Kamal Patricia, and to be felicitated by our principal sir. So Honorable ADM sir is going to be felicitated by our principal sir. Token of love from K.S.U.B. Bhanjanagar. Now it is time to felicitate our esteemed patron and a guest of honor, Dr. Siddharth Sankar Padhi sir, Regional Director, and he is also going to be felicitated by our principal sir. Give a big hand please. Now it is time. Now it is time. We are felicitating our. Thank you, sir. Now it is time to felicitate our NEC chairman, Gopabandhu sir, and he is going to be felicitated by our esteemed director sir. So esteemed director sir, please felicitate our guest of honor, NEC chairman sir. And it is time to felicitate our block chairman and to be felicitated by our ADM sir. ADM sir, please. And now we are going to felicitate our block chairman sir, Nari Sabatai, one of the youngest representative of this area. So give a big hand please. Now it is time to felicitate our esteemed icon of women empowerment, S.S. Swai madam, and to be felicitated by our honorable MLA sir. So MLA sir, please felicitate our Swai madam. Professor Felicitation Swai madam is going to be felicitated by our honorable MLA Bhanjanagar, Pradeep Kumar Naik sir. Now, history has been made in this K.S.U.B. So now time is to felicitate our chief speaker, Professor Dr. Lakshmandar Behera sir, chief speaker of today's occasion, going to be felicitated by our principal sir. Now it's time to felicitate our guest of honor, Prem Singh Bishtiji, the person who has traveled 48 hours to reach here. So he is to be felicitated by our esteemed regional director sir. So Prem Singh Bishtiji is going to be felicitated by our esteemed RD sir. Thank you, sir. Now time to felicitate our honorable Sarpan sir.
Honorable Sarpant sir is going to be felicitated by our Chief Speaker, Professor Behera sir. Honorable Sarpant sir is being felicitated by our youngest professor, Professor Behera sir. Thank you so much, sir. Now, time to felicitate Organizing Secretary of the seminar, Dr. Satyavadi Marthaji, and to be felicitated our principal, sir. Dr. Satyavadi Martha, Organizing Secretary of this national seminar, is being felicitated by our principal, sir. So, can we begin, please? एक करके जो लगे हैं is going to be felicitated, is being felicitated. Thank you, sir. Teamwork. So, last but not least, time to felicitate our beloved principal, convener and director of this seminar, Professor Dignitary, the dynamic leader, educationist, administrator, academician, to be felicitated by our honorable chief guest of today's occasion, Honorable MLA sir, Honorable MLA sir is going to felicitate our principal sir. Give me a hand, please. On behalf of Felicitation, we are felicitating our principal sir. Thank you so much, sir. अभी देर हो रहा हूँ, so ये खूबसूरत वक्त में हमारे अतिथियों को हम लोग नमन किए, प्रणाम किए, अभिनंदन किए. The time to witness, actually, here history has been made. As we know, one seminar we have already organized successfully last year. In that seminar, more than 100 papers were there. Some papers were selected by the editors, and the time to release the books. Now the time is to release the book, and we have two books. First book, that is Indian Knowledge System. First book, it is Indian Knowledge System, and the chief editor of this book is our Professor Viksit Bharat and associate editor by myself, Dr. K.S.U.B, Dr. Ganjam, Dr. Satyavadi Martha, and a K.P. assistant professor of this institution. So, first book, that is Indian Knowledge System. Book is the tangible form of God, and really, वो किताब याद रह जाता है जिंदगी भर. So, time to witness the event of last year's seminar, that was implemented, that is the National Education Policy 2020. We have received more than 100 papers, and out of all those papers, only 77 papers were selected. So congratulate all the authors, congratulate all the editors, congratulate the publisher, particularly Friends in History, Kunal publisher, New Delhi, and NEP publication. Thank you, sir. And again also we are releasing today the second book entitled Indian Knowledge System and the Vision of Viksit Bharat. Indian Knowledge System and the Vision of Viksit Bharat after 2047. India, Bharatvarsh, Jambudvipa, Bharatkhand.
Pushkar Pratham, Bharat, we are going to see that period in the year of 2047, that the vision and the mission, and on that we have published another book, released another book, and based upon the theme, sub-theme and seminars papers that is entitled Indian Knowledge System and the Vision of Viksit Bharat after 2047. Chief editor of this book, Professor Viksit Bharat, and with me, Dr. Marpaji, Dr. Nayak, and Dr. Kunti are the associate editors. So congratulate all the editors as well as the participants and the authors. So history has been made in this system. We have released on the same day. Congratulations, one and all. national seminar group The publisher, our dear brother, K.S.U.B, who has traveled 48 hours from Delhi to reach here with the volume. So thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you all the participants, all the dignitaries here. Now, actually, the main part of the seminar, we are assembled here to hear the golden words, what actually implementation of National Education Policy 2020 and the vision of Viksit Bharat. On behalf of this house, I would like to request our esteemed patron and guest of honor, Dr. Siddharth Padisar, Regional Director of Education Bharat, brilliant academician, as well as an ideal administrator. Sir, please. जय जगन्नाथ। सर्वप्रथमे महाप्रभु जगन्नाथ पाद तले शत शत प्रणाम। जहाँ को पाई ये माटी गर्भित, जहाँ को पाई ये ओडिया जातिर प्राणस्पंदन से कवि सम्राट उपेन्द्र भंजन को पाद तले शत शत प्रणाम। उपेन्द्र भंजन को गोटे बातरे प्रणत जनाई मोर वक्तव्य संक्षिप्त वक्तव्य आरंभ करी। देखी नकालिका पकालिका मालिका आलिका लिका अंत स्मरी रक्षा के मंत करी करी रे मत करी बाबू के मंत विचारी भावे वंशीले कालो कथा रोहिथी गो कालो रे उपेन्द्र भंजन पाद तले प्रणाम। मंच उपस्थित आजिका मान्यवर मुख्य अतिथि ये अंचल ओडिशा जने जनप्रिय विधायक महोदय, मंच उपस्थित भंजनगर NEC चेयरमैन महोदय, मंच उपस्थित ब्लॉक चेयरमैन महोदय, सरपंच महोदय, मैडम मैडम सार एटीएम सार प्रस्तुति विमल सार देखी सारस्वत कार्यक्रम आवाहक
आजिका मुख्य वक्ता मंच उपस्थित अन्य समस्त सम्मान अतिथिवृंद सामने उपस्थित समस्त अतिथि जोगदेवा आसथिबा समस्त पार्टिसिपेंट छात्र छात्री बंधु समय घंटे we are running by 3 hours late. The train is late by 3 hours. तेणु आज विषय होची विकसित भारत एवं जातीय शिक्षा ताकि सारे बदल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड विकसित भारत मु भावची विषय एमिति रही तांदा जे विकसित भारत पई जातीय शिक्षा नीतिर प्रासंगिकता एवं प्रयोग ताकि विकसित भारत होबार सहायता करे विषय को मोटा मोटा भाबे एमिति शिक्षा साथ करछन मोर जहां मोटा मोटी मोर जहां अनुभव तो ये एक विस्तृत खेल पड़िया आलोचना करतो आपनकर आलोचक माने बहु आलोचना विषय करिले मु संक्षिप्त मात्र 2022 मसिया हठात एते एक सकाळ भारतर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 कोटी लोकन पाखरे स्वप्न देखिले विकसित भारतर स्वाधीनता पाइबार 75 वर्ष पर ये 75 वर्ष धरि हम कहउथिले कोन 1947 रे हम स्वाधीनता पाइले तार 25 वर्ष पर 1962 के विकसित भारत निर्माण 1900 ता 25 वर्ष पर ही बात था 1987 97 किंतु से स्वप्न गड़ी 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 2022 पर्यंत आसे 2022 बेलू हम चिंता करते हैं आम पृथ्वी में विकसित होगा विकासशील राष्ट्र आमको विकसित होगा तेणु 25 वर्ष धरी निरवच्छिन्न उद्यम कले आमे विकासशील पर्याय विकसित पर्याय ये तो गोटे द्वितीय पर्याय होची विकासशील पर्याय विकसित पर्याय को जीवा बेले मो परी आपण मान परी अध्यापक शिक्षक मानकर कोन भूमिका अछि सार दृष्टि सार अछंती सार प्रद्युम्न नायक सार अछंती ए माने सब बसिरी से माने तार पॉलिसी डिसीजन करे आम्बे गुडे मास्टर से भितर हम कोन करे किंतु एमिति एक मंजी खोजछंती सब भारत वर्षर सब शिक्षा अनुष्ठान रे वर्तमान गोटे पर्व चलछि जातीय शिक्षा नीति एवं विकसित भारत अन्य कोनोसी गोटे सेक्टर रे एते प्रकार आलोचना होना कारण होला जी हमको नेतृत्व नौचंती सी भाबुचंती यदि ई शिक्षा अनुष्ठान रे ए मंजी की यदि पोता न होबो ताले 25 वर्ष पर जो गछटी होबो पूरी 75 वर्ष धरि जहा आइतला ठीक से आनिबो तेन आम मान पछरे से उठी से जो सुली फुटिया लगे दिछथि एवं आमे सुतो होछथि वर्तमान प्रति शिक्षा अनुष्ठान रे चाहि भारत स्वाधीन जेतबेला हम अवस्था कोन थिला भारत स्वाधीन जेतबेला अर्थनैतिक क्षेत्र रे समग्र पृथ्वी रे हम षष्ठ स्थान रे थिले आम पूर्व 6 देश वर्तमान 2020 21 22 बेलू आम पंचम स्थान को आसन अर्थनीति आमको विकसित भाव तृतीय स्थान दिया षष्ठ स्थान पंचम स्थान आसिले एक 25 75 वर्ष भीतर आम षष्ठ स्थान तृतीय स्थान जाई पारथि 1947 से आम षष्ठ स्थान थिले 1980 में 13 स्थान पळे पड़थि हमर केमिति राजनीतिक प्रक्रिया हला केमिति अर्थनैतिक हमर सब पॉलिसी हला जे 1980 में मसिया बेलू हम भारत वर्ष अर्थनैतिक स्थिति रे हम समग्र पृथ्वी रे 13 स्थान गले पुन 13 रो उठी बहु कष्ट रे वर्तमान पंचम स्थान आछन वर्तमान जेहेतु मेसिन का पूरा चालुची पूरा तेल पपी 10 वर्ष तक मेसिन का पूरा चले दिछन
ତେଣୁ ଆମକୁ ଦୌଡ଼ିବାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସହଜ ହେବ। ଆଉ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇବା। ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ, ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ, ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ତରରେ, ଭାଷା ସ୍ତରରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ତରରେ ସବୁରେ ଆମକୁ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ଯୋଉ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ତାକୁ ଆମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ 1947 ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହା ସଫଳ। ଏବଂ ତା ପାଇଁ ମୂଳ କଥାଟି ହେଉଛି ଆଉ ସବୁ ହବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଟା ଦରକାର। ତେଣୁ 2020 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ବୋଲି ଘୋଷଣା ଯେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଯଦି ଭାରତର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ପ୍ରଚଳିତ ହେବ ତାହେଲେ ଏ ବିକଶିତ ଭାରତ ବର୍ଷର ରୂପ ସାର୍ଥକ ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ବିକିବାର ପ୍ରୟାସ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି 1835 ମସିହାର ମ୍ୟାଟ୍ରିକରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1947 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 117 ବର୍ଷ 112 ବର୍ଷ ଧରି ଆମକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲିଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1947 ପରେ 1980 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକରଣ ଏ ଦିଟା ଏବଂ ତାପରେ ତାର ଯୋଉ ଅନର୍ପର ଫଳ 2000 ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ରେ ଭାରତବର୍ଷ ନିଜସ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରି ଆମର जो ज्ञान कौशल अच्छे से ज्ञान कौशल प्रयोग करी आमे आम माटी आम गछ लगेबा आमर फल आमको भल ओडिशा गछर ऋण ओडिशा गछर फल आम पई आउ चालिबो नाही ए कथाटी जेतेबेले भारतीय मान उपलब्धि कले सेतेबेले जातीय शिक्षा नीति आरंभ होला एवं 2022 रु 2047 पर्यंत यार सफल क्रियान्वयन प्रति शिक्षानुष्ठान एक प्रकार योजनाबद्ध भाव चलती काम एवं सार मैंने जिते बही लिखले छात्र छात्री मैंने अच्छे से बयस पढ़ुंट सब स्तर कार्य चलती से कार्य निश्चित भाव सुदूर प्रसारी एवं सफल हम एवं ये आजिकार ये जो आलोचना निश्चित भाव कौटी ना कौटी एक गुंडीची मुसा पड़े किसी निश्चित भाव बाली पकई से निश्चित भाव दृढ़ीभूत कर मते अपॉइंटमेंट आछंती म आपन मान बार कृतज्ञ एवं धन्यवाद। धन्यवाद सर आपनकर सारकर भग चुकुटीर भाषाशैली सहित आज तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर कहले मंजी शिक्षानुष्ठान रे कथा हो एवं आम माटी रे गछ हम ता फल ध्यान खाइबा आ धन्यवाद सर वर्तमान now it is time to hear our esteemed guest of honor Dr. Pramod Kumar Kustik sir, Honorable ADM, Chhatrapur, Ganjam, who is a brilliant scholar of education, one of the reverence and ideal educator. Sir, please, and enlighten the house. समस्त को नमस्कार। आज रही सेमिनार रे आमर मुख्य अतिथि ऑनरेबल लेवल भंजनगर मुख्य वक्ता जी कीनोट प्रोफेसर प्रफुल्ल बेहरा मो सान भाई आमर भंजनगर NEP चेयरमैन भंजनगर पंचायत समिति अध्यक्ष महोदय आमर सरपंच शिवराम बाबू मत पढ़े मो मैडम मैडम उपस्थित समस्त गेस्ट आगे बसला सब
गेस्ट मैंने पिला मैंने मोर भी किसी चिन्ह परिचित समस्त को मु जिला प्रशासन तरफ एथि स्वागत करुछि जे हमर ये जिला भितर गोटे अनुष्ठान ये अनुष्ठानटी भल आगे गोटे भी करथिले मु एक्चुअली सेमिनार को जबे भी द्वितीय सेमिनार धन्यवाद देवी हमर प्रिंसिपल महोदय ये कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करते ये दिस इज फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज तेणु ये आम एकत्रित करेतु से कहते प्रिंसिपल मुझे एजुकेशन लोक थी मोर गोटे भितर आग्रह अच्छे जो हुए ये चिन्ह डाकते मुझे भी आग्रह हुए कही 12टा बेले कारण से 3टा बेले गोटे बड़ कम अच्छे मुझे पढ़ेबी जहाँ मत प्रथम सुजोग देखिबार धन्यवाद देवी आभार पाखे 2-3टी कथा कहबी बहुत एरुडाइट स्कॉलर्स अच्छी से रिसर्च कर बहुत पाठ पढ़ी से बहुत भल कथा कहे विकसित भारत आमपी जोटा कहते पढ़ उल्टा हबार था तार उद्देश्य मुझे 2-3टी कथा कह 1834 मसीह आम समस्त गाड़ी देते से जड़े थे थॉमस मार्कले ये आम कहते मार्कले एजुकेशन पॉलिसी मिशन मार्कले रिन्यूज कहुए से एजुकेशन जो आंग्लिश ओरिएंटालिस्ट करके आमको इंग्लिश एजुकेशन देते से आम विरोध करते किंतु बर्तमान आम देखते इंग्लिश एजुकेशन इट इम्पेरेटिव जदि आम मातृभाषा प्रथम आम जो 3 लैंग्वेज करते इंग्लिश ना बाहर जाइए इंडिया भितर भी आप जेको काम करेंगे जब इंग्लिश न जाने लगे तेणु से विरोध करते कि विकसित भारत कहते मुझे गोटे कथा कहि आज जो आम महान पुरुष उपेन्द्र मान पूजा करते सी जो काव्य देखिए जाते कालिदास जो मेघदूत देखिए जाते कालिदास साइंटिस्ट नथिले सी क्लाइमेट पढ़ी नथिले बुझेगा कि मेघ कौटू आसिक बसुची से 1000 वर्ष पूर्व से देखुले जो फास्ट था तृतीय चली पूजा कले शिव बाबा से देखिकी कहीदे से गोटे काव्य मेघदूत जमी मेघ आसुटी आसुटी क्लाइमेट आम जो आप देखते मृत्युंजय महापात्र पूर्व जिते फोरकास्टिंग होता मेघ हम घड़घड़ी हम वर्षा हम सब भूल होता मृत्युंजय महापात्र आसा सब ठीक है ठीक कर निजे भी कहता तेणु कालिदास से पाठ पढ़ी से महाकाव्य देखते मेघ केमी आस कौटी बस आम गाँव में जो कृषक भाई अच्छी सी कहदेव सी किसी पाठ पढ़ी सी कहदेव मेघ केत मुझे मीटिंग कहते गोटे मोर पर्सनाल एक्सपीरियंस अच्छी भुवनेश्वर से थे मो छोट झील मुझे जाऊँगी रविन्द्र गोटे प्रोग्राम सारी घर आचार्य बिहार पाखे जो साइंस पार्क अच्छी से जगह छोट छोट कांकड़ बिकुला मोर टे कांकड़ मुझे कांकड़ बिकु झील टी रखी कांकड़ बिकु ये कहला जे मो से बिकुला बाबू छोट झील टी धरिके शीघ्र पड़ा शीघ्र पड़ा मुझे हाँ जी मौसा ना ना वर्षा वर्षा हो तुम शीघ्र लेकिन पड़े मुझे जस्ट आसी ओवरब्रिज जो आचार्य से केते वर्षा है आम आगे जाइए मतलब ये रही किसी ना खोला ये आकाश मो झील से पचारा बापा से मौसा कहला वर्षा हे वर्षा रहा बुझे दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्ड पर्सन्स जे कृषक तार एक्सपीरियंस अच्छी जे आर्टिस्ट तार एक्सपीरियंस इनका समय था जो भारत को पूजा करते नॉलेज से आम पूजा करता भारत से समय था वैदिक युग जो लिखा है गुप्त युग में चंद्रगुप्त मौर्य समय जो विक्रमादित्य समय जो नवरत्न थे सी सब आम इतिहास मन रखिए से उत्कर्षता लाभ करता आम देश से उत्कर्षता धीरे धीरे कटिकी आसिक बर्तमान अवस्था जोटा कहते आम 47 वर्ष पर डेभलपिंग कंट्री अच्छी नाउ वी आर थिंकिंग दैट आफ्टर 25-22 years will be विकसित
ତେଣୁ ବିକଶିତ ପାଇଁ ଯୋଉ ଧାରା ଦିଆଯାଇଛି ମୁଁ 2-3ଟି ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଅଗଷ୍ଟ 6 ତାରିଖରେ ହିରୋସୀମାରେ ବୋମ୍ବାର୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ନାଗାସାକିରେ ବୋମ୍ବାର୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଲା। କେତେ 1943 ମସିହା। 1960 ମସିହା 55-60 ମସିହା ଭିତରେ ଜାପାନ ଡେଭଲପ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଥୋଇ ଦେଉଛି ଏଇଠି ଏଇ ପାଖରେ ସେ ସାର୍ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି କେତେ ଅତି ବେଶୀରେ 5-10 ସାର୍ ବର୍ଷ ଆସୁନାହାନ୍ତି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ ଡେଭଲପ। ସେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ ପିଲା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ସାମୁଏଲ ବ୍ଲୁମ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସୋନମି ଅଫ ଏଜୁକେସନ ସେ ଲେଖା ଫଟୋ ସେ ନେଇ ଲେଖା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ତାର ଇତିହାସ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସ୍ପୁଟନିକ ରଷିଆ ଆଉ ଆମେରିକା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନଲେଜର ଗେମ୍ ଚାଲିଥିଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଥିଲା ରଷିଆ ଆଗେ ସ୍ପୁଟନିକ ପଠେଇଦେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଯେତେବେଳେ ପଠେଇଦେଲା ଆମେରିକା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ why Russia succeeded in sending the Sputnik ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କମିଟି ବସିଲା ହେଲା ସେ କମିଟି ବସିକି ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା କାହିଁକି ଆମେ ଏତେ ଡେଭଲପ ହେଇକି ଇକୋନୋମିକାଲି ଏତେ ଡେଭଲପ ହେଇକି ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଲଗେଇକି ଆମେ କାହିଁ ପାରିଲେନି ରଷିଆ କାହିଁ ପାରିଲା ସେତେବେଳେ ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଭାବିଲେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଯାସ ଲାଗା ଯେ ଆମର ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଇଜ ଫଲ୍ଟି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ आवर ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଫେଲ୍ ଟୁ ଡୁ ଦିସ୍ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ସାମୁଏଲ ବ୍ଲୁମଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସେଇକି ସେ ତାପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସୋନମି ଅଫ ଏଜୁକେସନ ତିଆରି କଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ରାତାରାତି ମାନେ at one point they changed the education system they felt the education system is the only means for which national development is ensured ତେଣୁ ସେ ଇଏ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉଟା କହିଛୁ ଆମର ଏଜୁକେସନ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଜୁକେସନ କମିଶନ ଯୋଉଟା କହିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଥିଲେ ଫ୍ୟୁଚର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ସାଟ୍ ଇନ୍ ୟୁର କ୍ଲାସ ରୁମ୍ସ ଯୋଉଟା ସେ କହୁଥିଲେ ଟିଚର ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ବିକଶିତ ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେମିନାର କାହିଁକି ହେଉଛି ସେଇ ଟିଚର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତିଆରି କଲେ ସେଇ ଟିଚର ଶିବାଜୀ ତିଆରି କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ଟିଚରଙ୍କର ଭୂମିକା ଯୋଉଠି ନେଗ୍ଲିଜେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ସେଠି ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଖିବେ ଡାଉନୱାର୍ଡ ରହିଛି टीचर माने इन ट्रू सेंस तेणु टीचर माने कोन दिग्दर्शन देबे तेणु जो लेके एजुकेशन आ शिक्षा को बेसी इंपोर्टेंस दिया छि यूएस भलिया राष्ट्र से भी आसी सेटी डेवलपमेंट हि तेणु दिस आर दी इंस्टेंसेस आ गोटे इस्राएल देखो आपण जदि आमे देखिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में जोटा बाहर डेनमार्क गोटे छोटो राज्य डेनमार्क फिनलैंड तापर सिंगापुर निडोटी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स करप्शन में ताकर 0 फास्ट वी आर एट द बॉटम माने हाईएस्ट करप्शन तेणु छोट राज्य जदि भल काम करि परछनी आगो काका सब ताको पाखे एते रिसोर्स भी नाही आपण इस्राएल गोटे देखो इस्राएल गोटे राज्य जोटी आपण देखले तार डिफेंस एते स्ट्रांग वी आर परचेजिंग डिफेंस नॉलेज फ्रॉम देम केते जगह से इमिटी करछि माने एरिया के एंट्री कर परछन विलेज के एंट्री कर परछन छोट राज्य नॉलेज को तेणु इंडिया जिनस जदि समान कर परछन आमे काहे 47 वर्ष कोन आमे एपर्यंत डेवलपिंग स्टेज रे अछि हेई आमे काम करते आमे हमर इंडिया के एजुकेशन पॉलिसी रे जो 10+2+3 कले तापरे एमपी आस्ता 86 गोटे एसपी कले 86 रे तार प्रोग्राम ऑफ एक्शन केते हो 92 रे बाहर 6 वर्ष लागिला आमे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को किमिति इंप्लीमेंट करिवो वी टू 6 इयर्स ऑफ फ्रेमवर्क दिस इज आवर कंडीशन तारपरे आमे करते एग्री जोटा आडियो को कहले एटा उल्टा हवा था एक्चुअली उल्टा जदि आपण एजुकेशन होउची खाली कॉर्पोरेट कहले जे आमे गां करते गोटे गोल सृष्टि करते विकसित भारत रे गोल सृष्टि कर विकसित भारत 4-5टी गोल रखिले फार्मर वुमेन आपनकर यूथ नहीं कि आउटर पॉवर्टी ये चारटे जो तैयारी करते हैं स्ट्रैटेजी तैयारी से स्ट्रैटेजी तैयारी करके आगे विकसित भारत रे 30 ट्रिलियन जदि इकोनॉमिक आगे हासिल करदा विकसित भारत देखना ओनली इकोनॉमिकल अचीवमेंट और richness cannot determine our विकसित भारत मु गोटे उदाहरण सबुठु बेसी हमर लिटरेट होउछन केरल रे सबुठु बेसी ओल्ड एज होम अछि
ओल्ड एज होम किए नाम बाबा जब बेसी हमें पाठ पढ़ले हमें बापू मां को पचारले हम माटी की पचारले मां को पचारले देश को पचारले ताले एजुकेशन माने को खाली पैसा रोजगार करबा है बापू मां जब बेटी बेड रे पड़ले रोग सदे पिला यूएस से को पठे पैसा हमने को ओल्ड एज होम रे पैसा मु से व्यवस्था को जते पैसा दरकार दिया इजी एजुकेशन इंडिया रे एजुकेशन सेटा भारत रो वैदिक एजुकेशन से एबे भी भारत रो एजुकेशन सेटा आगो होती गोटे परिवार वर्ग जोटा देखबे फॉरेन कंट्रीज रे जो माने इकोनॉमिकली पूरा हाई सब पैसा আছে सब धन আছে सब प्रकार अवसर करे धरिबो से माने सब छाडी देबे आसी कि वृंदावन रे इस्कन रे पहुंच काहे कि ना से माने तो ऑप्टिमम स्टेज पळेले सब आश्रय करले फांका सेठी आ किछ नाही जीवन रे कोन अछि सेटा व्याख्या करता जो गोटा भारत शिखाए आ भारत शिखौछि मत कोन जदि केरल देखो थर्ड इन इंडिया इन क्राइम हाईएस्ट एजुकेटेड दिल्ली सबु एजुकेटेड बेसी लोक रहिले सेठी क्राइम बेसी सब प्रकार अव्यवस्था बेसी तेणु आप कॉन्ट्रास्ट एजुकेशन आम दौचे वर्तमान जो एजुकेशन दौचे तार विकास जोटा आम दौचे इन ट्रू सेंस विकास सेटा आसुना तेणु आम एजुकेशन सीन दिया कथा जो कि आमर ऑब्जेक्टिव भलो मनुष्य जो भी जीव से सेठी विकास आनिबो जदि भलो मनुष्य आम भितर ह्यूमन टेंडेंसी जागृत करिवो तारे से जो भी जो प्रोफेशन बुझाउना नहीं से घास काटियो भलो घास काटियो से रोषे करियो भलो रोषे करियो बियर चाकरी देले भलो सुना दबो लेक्चरर रे ठीक समय पाठ पढियो भलो पाठ पढियो भलो टीचर सृष्टि करियो भलो पिला सृष्टि करियो परिवार में जदि रहबो से भलो पुओ दिया हो भलो मां दिया हो भलो स्त्री दिया हो भलो भाई दिया हो आमे सेटा करू जदि ऑनलाइन आमे खाली पैसा रोजगार करी इकोनॉमिक डेवलपमेंट आनले एपटे सब नष्ट होई इट इज ट्रूथ तेणु आमो कथा कहवा जोटा आडियो बोले आमे विकसित भारत लक्ष्य ठीक कले विकसित भारत होची विकसित लोक आसिले विकसित भारत तेणु विकसित लोक जेतेबे आसीबो से विकसित लोक निश्चित भाव में देशर मंगल करियो तार परिवार मंगल करियो तार भी मंगल करियो तेणु आम जो वसुधैव कुटुंबकम सेटा आम एजुकेशन शिखाए भारतीय एजुकेशन ही शिखाए ट्रू एजुकेशन टीचर्स वसुधैव कुटुंबकम खाली मु मो चारिपटे इवन गछ लता वृक्ष प्राणी पतंग समस्त नहीं वसुधैव कुटुंबकम आम जदि कहया पशु मैंने मरी जाते ये आम गंजाम माकड़ बेसी अच्छे समस्त कहते माकड़ एमती माकड़ नहीं कर छाड़ मु महेंद्रगिरी गली गोटे माकड़ खाली महेंद्रगिरी जीवा गोटे माकड़ एते बड़ पहाड़ गोटे माकड़ ना किंतु हम छत्रपुर माकड़ घर बसी तेणु लोक को माकड़ को काटे माकड़ काटे सब तेणु ये सब जिन को हमको सोशली बैलेंस रखा पड़ो एनवायरमेंटल इक्विलिब्रियम रखा पड़ो ये सब जिन शिक्षा ही शिक्षा तेणु आमको जदि विकसित भारत गठन करार अच्छी आम लक्ष्य को धार्य करके आम शिक्षा नीति से प्रिपेयर करार अच्छी सौभाग्य विषय आम विकसित भारत आसला 24 रे एबे आपन ओपन अछि आपन गोटे गवर्नमेंट वेबसाइट अछि माय गवर्नमेंट पोर्टल अछि आपन जो कथा चिंता करथिनि इते सजेस्ट दे आपन सभी सजेशन देई करिवे से सजेशन गवर्नमेंट समय समय ताको रिव्यू करते भलो सजेशन आसले से माने इंप्लीमेंट करिया चेष्टा करथि से सजेशन को नै हमर एजुकेशन पॉलिसी रे कोड हो ओडिशा सरकार एबे हमर न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करिया करि गोटे कमिटी करथि जो कमिटी अछि जे विद्यालय शास्त्र पौरोहित्य गुटे कमिटी अच्छा सब एजुकेशन सब विभिन्न बंधन प्रोफेशनल्स अछथि सेठी इंप्लीमेंट होला चाली किंतु हमको सेठी देखिया कथा जे हमर जो कोर ऑब्जेक्टिव जोड़ा रहला एम्स रहला से भीतर रे आसे बेसिकली होती मनुष्य जो कि आपण देखिए मनुष्य सृष्टि भलो हेछि सेठी विकास आसी तेणु विकास केते बेला अवरोध हम आम जो भावी 3000 जो आम 5 इयर प्लान कले 20 पॉइंट प्रोग्राम कले तापर आम गोटे विजन 2020 भी कले से सब एबे किछि फलप्रद हेला 5 इयर प्लान थिला से हम इक्वली जो कैपेसिटी कम थिला तेणु हम शॉर्ट विजन रे करले 5 वर्ष हम कोन हासिल करले किमिति को गरीब पे
केमिति किछि किछि करके लोक स्वावलंबी करे तेणु वर्तमान सेटा किछि किछि जगह नेगेटिव है नेगेटिव मो पर्सनल व्यक्तिगत मत है जे आम भीतर गोटे गरीबत्व होगा गरीब होगा गोटे मानसिकता जागृत है जदि आप कहे किए रेशन कार्ड नब गरीब लोक को सरकार रेशन कार्ड देवे किए रेशन कार्ड नब आगे बेसी जे धनी से अप्लाई करेंगे जो काम अवस्था में इनकम टैक्स वाला रेशन कार्ड कर दे इच्छा होनी जे आमे आसी सेठी सरेंडर करू भल जे प्रकृतर करियो पाई ये जो गरीब मानसिकता को ताको हटेगा पड़ियो ये हटियो कोसे ता तो सेल्फ कांसेप्ट सेल्फ रेस्पेक्ट आसी मु निजे ठीक अछि मु निजर आ मो समाजर मो राज्यर राष्ट्रर यार मान रक्षा करिया से जो सेल्फ कांसेप्ट ताको सेति बेले ये सब संभव हो आम आशा करिया ये सेमिनार किछि दिग्दर्शन दो हमर एक्सपीरियंस लोक अछंती मोर किंतु खाली मन पिला रहे मु कार्यरतता तो रही पारे क्षमा करदे मते आउ आशा करूँ आलोचना नॉलेज ये पेपर बाहर करते मैडम मत कहते जे ये पॉइंट रही आम सब एजुकेशन को जानते पॉइंट हूँ आम संपद से जो रहा आम समस्त देखिदेव आगे आसो आम परवर्त पीढ़ी देखो डिजिटाल बुक्स बाहर तेणु मो भारी दुखित रही पारे आम बंधु मैंने अच्छा सब डेलीवेशन देवे मुझे आशा करी डेलीवेशन कई आगे आगे बाहर बाहर उपकृत धन्यवाद मत सुजोग धन्यवाद बहुत धन्यवाद सर आपणकर सारगर्भक वार्ता आज नेशनल सेमिनार एक मन रहा भल मनुष्य पूजा चली से परिप्रेक्षी और शिक्षार जो गुरुदायित्व अच्छी आम चेष्टा करूँ आम शिक्षा जहाँ की आखि खोली दिए एवं शिक्षा जहाँ की आलोकर वर्तिका तो धन्यवाद सर आप सारगर्भक वार्ता नाउ टाइम लिसन आवर esteemed guest of honor Shri Lorisabha Nayak sir, chairperson Bhanjanagar block. So Lorisabha Nayak sir, please come and enlighten the house with words. Thank you sir. ଆଜିର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତର ପର୍ବ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର NECର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛି ସେହି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିଗଣ ଏବଂ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ମଞ୍ଚରୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆଜି ମୋତେ ଏହି ମଞ୍ଚରେ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରେ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ଗଢ଼ିବାର ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ गोटे शिक्षक आम जो स्कूल पाठ पढ़ू आम गोटे शिक्षा दिए जे आम आउ जन भविष्य करवा अनुष्ठान आज सुजोग पाई कहवा निजक से धन्य मन आपने जानते शिक्षा कहते कि पूर्व जे शिक्षक मानक विकसित भारत में जोड़ार उद्देश्य कौन जो परिवार आम जन्मग्रहण करूँ बापा माँ हूँ सर्वप्रथम आम प्रथम गुरुजन एवं गुरुजी सेकेंड आम जो स्कूल को जाऊ शिक्षक आम सेकेंड गुरुजी तो तेणु जो परिवार आमको आदर्श शिखा जाए अनुष्ठान को गला शिक्षक पाक गला आम शिक्षा लाभ करूँ जो नरेंद्र मोदी माननीय आम प्रधानमंत्री जो उद्देश्य अच्छी जो विकसित भारत हमार जो आकांक्षा अच्छी शिक्षा प्रथम शिक्षा को गुरुत्व देवार अच्छी तो शिक्षक मान सर्वप्रथम उद्देश्य गुरुत्वपूर्ण कहीं आम शिक्षा
आईने शिक्षित होगा एवं परिवार शिक्षित होगा एवं देश शिक्षित होगा राज्य शिक्षित होगा गाँ शिक्षित होगा तेणु शिक्षक मान सर्वप्रथम गुरुत्व दि जाए तेणु आज मुझे अनुष्ठान सर्वप्रथम मोर पर्टिकुलरली नमस्कार जनाए एवं धन्यवाद ज्ञापन करे माननीय विधायक आज अनुष्ठान जो अनुष्ठान में आम शिक्षक शिक्षकता पाचे आउ गोटे मनीष को पढ़ा जो आज सुযোগ आपने अनुष्ठान पाई तेणु ये अनुष्ठान व्यवस्था मु गत दिन में आसती आज बहुत धन्यवाद देवी माननीय विधान को एखाने रहीकि गोटे मनीष को गढ़ी तोड़ार जो दायित्व आपण पाखे अच्छी आज दुई दुईटी हॉस्टेल को इनाग्रेशन कर धन्यवाद देवी मु अनुरोध करी प्रथम यही अनुष्ठान को आगू टे आर भल कम हो अनुरोध करी माननीय विधायक को एवं आज मुझे अनुष्ठान प्रिंसिपल महोदय को धन्यवाद देवी मत मंच आज आनी एवं समस्त शिक्षक को मोर आंतरिक शुभेच्छा दे मो वक्तव्य शेष करुच्ची जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आम मनीष शिक्षक शिक्षा अनुष्ठान में आपंकर जो सागरक आशीर्वचन आम निहाती पालन करने चाहिए। नाउ द टाइम हैज कम टू लिसन आवर ऑनरेबल गेस्ट ऑफ ऑनर श्री गोपबंधु महापात्र सर चेयरमैन NEP Bhanjanagar sir please and enlighten us sir please। जय जगन्नाथ। आज नेशनल सेमिनार पे आमर भंजनगर K.S.U.B बीडी कॉलेज एठारे कार्यक्रम रखिथिबार दर्श ता संगे संगे कॉलेज हॉस्टेल कोठा उद्घाटन उत्सव ये उत्सव प्रथम आम ये कॉलेज अध्यक्ष जी अच्छा भक्तिपूर्ण प्रणाम जनाऊँ तत्संगे संगे प्रिय विधायक महोदय जी आम गहन अच्छा ये कार्यक्रम भंजनगर सहर में सी आसवा दिन ठार प्रत्येक अनुष्ठान कार्यक्रम हाथ को नहीं ये विधायक मोर नमस्कार अन्य मंचासन थिबा ये कौन बड़े वक्तव्य सारी रिटर्न होइतिबा एडीएम साहब एवं बाड़ी साहब आमर ये आसंती कटक सुदूर कटक आमर विशेष स्वाई मैडम घर बड़ भाई आमर मुख्य वक्ता जी अच्छा एलडी बेहरा साहब आउ समस्त मंचासीन आमर दिल्ली ये अफिसर आसंती स्वागत करुँ आम भंजनाटी अन्य मानक मध्य बरण्य अतिथि जो मैंने बसुँच समस्त नमस्कार आशा करी अनुष्ठान जो स्कूल को जाए प्रथम शिक्षक शिक्षयित्री नमस्कार करे मो सम्मुख बसुँच आम हाईस्कूल प्रधान शिक्षक पचारि बुझीपारती किंतु ए शिक्षक मान तैयार कर जो अनुष्ठान अच्छी ये अनुष्ठान से शिक्षक मान तैयार हो ये हूँ फाउंडेशन आम भंजनगर अति गर्व गौरवर कथा जे तत्कालीन विधायक प्रचेषा फल आम भंजनगर एपरी एक अनुष्ठान तैयार होता जहाँफल कि भंजनगर आसी प्रत्येक ओडिशार कोण अनुकोणरू एठारे शिक्षकता लाभ करी जो माने उपकृत होइछन्ति से महान आत्मा को प्रथमे आज मो तरफ श्रद्धांजलि ज्ञापन करुछि। आशा करी ये अनुष्ठान भविष्य तैयार करथिबा जो
भारत वर्षर महान मानू शिक्षक मान तैयार करछंती से शिक्षक मान तैयार करिवारे ये अनुष्ठान प्रमुख भूमिका ग्रहण करछंती आउ सेही प्रमुख मानू पुणी थरे मु आजिर कार्यक्रम को स्वागत जनाई अभिनंदन जनाई मु गोटे कथा कहया चाहे जे ए कॉलेज को आसी मु इलेक्शन परे मते जे इंचार्ज थिले प्रिंसिपल से थरे निमंत्रण करथिले बहुत सुंदर कार्यक्रम करथिले किंतु आजिर कार्यक्रम रे कटक रु आरंभ करी अपना कोरापुट पर्यंत जो निमंत्रण करछंती निश्चित भावे कवि सम्राट उपेन्द्र भंजन माटी से माटी को सेमाने आसीबारु प्रथमे पुणी थे नमस्कार कर स्वागत जनाऊँगी ए माटी बहुत बड़ लोक मानू तैयार कर कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कहले सारा वर्ल्ड रे आप जानते ना धरी आम जो भी गले दाग कही आम पार होचे जे आम भंजनगर ना कह तो किए जान कि न जान किंतु कवि सम्राट उपेन्द्र भंजन ना कहले लोक जानती से अनुष्ठान से गाँव नामित होता यही कॉलेज निश्चित भाव आम भंजनगर गौरवर कथा ये भी जो बड़ लोक है सी कह भंजनगर रु आम उन्नति हो उत्तीर्ण हो आम ये परिस्थिति आज पहुंचु जहाँफल कि आम गर्व करने कथा आ निश्चित भाव भंजनगरवासी आगामी दिन हो कि वर्तमान हो सब गर्व छाती पुण्यमंड कर जो मैंने उत्तीर्ण हो जाती से भंजनगर ना निश्चित भाव पार्टी थोड़े थोड़े आसे जे मुझे पढ़ुली आज ये परिस्थिति अच्छी आमको गर्व लगे ये अनुष्ठान रक्षणाबेक्षण आउ उन्नति पे विधायक पार्टी खोली कि सरकार पार्टी आनी किंतु आज सागर बुला बेले नजर करी किसी हॉस्टेल रे सुव्यवस्था करने से सब सुचिंतित आपर भाव लेडीज मान अच्छा जेंट्स अच्छा तार से हॉस्टेल सुपर चालित हम से से ध्यान दे बाकी प्रिंसिपाल को हो कि आरएनपी स्टाफ को हो समस्त को डाकी आज निर्देश करछंती जे पिला माने एठी कैंटीन हबो एठी झियो पिला माने जो रूम रहिबे से रूम रे आपनकर अटैच बाथरूम रहिबो सेति प्रति आपण आगुरु केबे देखि नथिबे को विधायक ए छोट छोट कथा ध्यान दे सब कार्यक्रम करंती किंतु आमे आम गाँव में विधायक को पाइछे एक सुंदर कार्यक्रम करिवारे भंजनगर विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न अनुष्ठानिक कार्यक्रम आरंभ करी सब कार्यक्रम दखल दे निज हाथ को नहीं से कार्यक्रम करुवारु तांको आमे भंजनगरवासी साधुवाद दउछु तांकर दीर्घायु कामना करूछु एवं भगवान का प्रार्थना करूछु कर्म परिचालतु जहाँ फल भंजनगर एक सरस सुंदर रूपे गढ़ी तोलिबा जो आशा आम देखीचे स्वप्न को सी साकार करंतु और आपण मानकर सहयोग आमको नितांत आवश्यक शिक्षक माने जो देश में शिक्षा प्रति गुरुत्व न दिया जाए से देश माटी हो जाए किंतु आम सरकार शिक्षा प्रति गुरुत्व आज भारत 2-3 नंबर अच्छी आगामी दिन में 1 नंबर में पहुंचा जो प्रयास जारी रखुंट प्रिय प्रधानमंत्री आम निश्चित भाव सहयोग करवा एवं शिक्षा प्रति यत्नवान हवा आठू जो मनीष तैयारी कारखाना प्रस्तुत हुए किपर भाव से ठीक करवा आमर अध्यक्ष महोदय को अनुरोध करी स्कूल कॉलेज जहाँ किसी कार्यक्रम अच्छी से विधायक जरिया निश्चित भाव अनुरोध करूँ से निश्चित भाव कर
आगामी दिन में ए कॉलेज रो ये करिथिले से पुण्य आत्मा शांति पाई से प्रयास जारी रखिबे एवं आम भंजनगर रो ना एक रखी ए कॉलेज रो निश्चित भावे ओडिशा रे एक नंबर कॉलेज हबो सेति पे से यत्नवान हेबे ओ तांकर दायित्व बनेबे एति कोई मोर मु वक्तव्य साइन करछि। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। आपनकर जो स्वप्न जे आम भंजनगर माटीर शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय कवि सम्राट नाम नामित ताको आम ओडिशा रे एक नंबर करिबा। आपनकर हसमुख चेहरा देखले सर हम समस्त को इंस्पिरेशन सोर्स लागे हम आगे पदार शिक्षक आछथि। बहुत धन्यवाद सर। विष्णुमोर दया देश माटी रे देशवासी चली जा माटी रे देशर स्वराज पक्षे गाड़ पूर्व उत्तम कृषि मोर मांस हाड़ से नाम रे उत्कलमणि गोपबंधु नाम रे नामित। धन्यवाद सर। Now it's time to listen our esteemed guest of honor, Sri Sivaram Sahu sir, Sarpanch Lal Singh Nampal sir, sir please. नमस्कार। आज बीडी कॉलेज से अनुष्ठित होता सेमिनार रे आज बीडी कॉलेज रो बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल उद्घाटन उत्सव रे हमर प्रिय विधायक श्री युक्त प्रवीण नायक मुख्य अतिथि भावे जोग देछथि। आम अंचल रो सुनाम धन्य एनएसी चेयरमैन श्री युक्त गोपबंधु भाई मोर पंचायत समिति रो अध्यक्ष श्री युक्त नरीसभा नायक ओ ए कॉलेज रो प्रिंसिपल श्री स्वाई सर ओ बहुत दूर दूर आसीथिबा दिल्ली से सामू ओ मंचायत समस्त अतिथि बृंद को मोर नमस्कार। आज हूँ आम अंचल गोटे गर्व और गौरवर दिन। तेणु आम अंचल किमी सदा बेले विकास हम तेणु ए अंचल को गोटे एक नंबर अंचल करने विधायक जो स्वप्न देखते निर्वाचित होगा जो विभिन्न अनुष्ठान को जाई विभिन्न कार्यक्रम में सहयोग करी समस्त उत्साह उद्दीपनार सहित से काम को आग्रह सहित ग्रहण करछथि। मुझे मो पंचायत समस्या रे विधायक साहब पाखु जाइथि ताकर जो सहयोग मनोभूति और जे कोनोसी कार्य मु करिबा द्वारा जे कोनोसी कार्य ताकर जो आग्रह जो उद्दीपना मते देखि भाई खुशी लागे। तेणु करी मो पंचायत ए अनुष्ठान मो अंचल जाउथबा जो मु बेसी खुशी। तेणु करी विधायक जो स्वप्न देखिथि आम अंचल भंजनगर अंचल को एक नंबर करिबा पई तेणु ताकर जो इच्छा जो चेष्टा आम अंचल गोटे गर्व गौरव दिन। तेणुक मो सामने बसी आम अंचल बहुत बुद्धिजीवी शिक्षक शिक्षयित्री भाई भौणी मान सदा बेले आशीर्वाद थाऊ। आम अंचल को एक नंबर अंचल भंजनगर ब्लॉक भंजनगर विधायक हिसाब से आम अंचल को एक नंबर कर सहयोगिता सदा रही। तेणुक मुझे कही मो पंचायत को सदा बेले शुभ दृष्टि रखी था। ए पंचायत ए बीडी कॉलेज रे जाउथबा मु विधायक विशेष अनुरोध करूची ए अंचल किति डेवलप हो मु जेतो जो कथा नै जाई मो पंचायत रो मु विभिन्न असुविधा विषय कहते ताके सदा बेले सहयोग हाथ बढ़ाई। तेणुक ए शिक्षा अनुष्ठान रे जेमि मनीष तैयारी कार्यक्रम रे समस्त जेमि मनीष उपाय को तैयारी करबा आजिर छात्र कालिर भविष्यत जो छात्र छात्री माने ए अनुष्ठान रे शिक्षक ग्रहण करछथि आगामी दिन रे ताकर आम देश ताकर हाथ रे देखि दउछि। तेणुक समस्त को अनुरोध रहइबो मो अंचल रे बीडी कॉलेज रे शिक्षक छात्र छात्री मान अनुरोध रहइबो ताके जीवनी भल नागरिक भावे आर हाथ में आमर देश जी सदा बेले उत्सर्गीकरण हम। तेणुक समस्त मनोभूति नहीं समस्त को अनुरोध करे आम अंचल डेभलप करने आपण समस्त सहयोग एकांत कारण ये मोर वक्तव्य स्नान कर। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको आम अनुष्ठान सहित बहुत जड़ित आम गत वर्ष जो कार्यक्रम करूँ अतिथि थे आपणकर जो कार्य कर शैली मोर मन पड़े प्राणी भारत दुख प्रणीत देखु देखुवा सबू
मो जीवन पछे धरती पड़ी थाउ जगत उद्धार हो जे जगन्नाथ आपण को एते साहस्य को हमर सब दिन पाई सुख शांति रे आपण सहायक बंधु जेतु हमर इंस्टीट्यूट आसु आपण को पंचायत अंदर थैंक यू सो मच सर नाउ टाइम टू लिसन today's our esteemed guest of honor Professor Felicitation Swami Madam, former principal Salawala Women's College, who is the icon of Indian women empowerment. Please, madam. जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सर्वप्रथमे এই पवित्र माटी এই पवित्र अनुष्ठान जहाँ नाम नामित से कवि सम्राट उपेन्द्र भजनकर पादपद्म मोर भक्तिपूत प्रणाम श्रद्धांजलि। आमर आज नेशनल सेमिनार जो मुख्य आकर्षण एवं मुख्य अतिथि श्रीयुक्त प्रद्युम्न कुमार नायक महोदय तांकु मोर प्रणाम। आमर मंच रही गोपबंधु भाई जे आमर एनएससी चेयरमैन शिव बाबू आउ लक्ष्मीधर बाबू आउ कॉलेज जे प्रिंसिपल अच्छा जे आज अध्यक्षता कर सेमिनार को एवं गोटे वर्ष भितर 2-2 जातीय आलोचना चक्र को जे करै पारिछंती प्रोफेसर विमल चरण स्वाई एवं तांको पाखरे अछंती हमरो दिल्ली रो कुणाल बुक्स एनपी पब्लिकेशन रो जे मालिक प्रेम सिंह कृष्टी आउ चेयरपर्सन भंजनगर ब्लॉक रो श्री नरेश नायक महोदय हमरो सरपंच सार मध्य अछंती मोर 2 जन छात्र मध्य एठी थिले जे प्रमोद बाबू चली गलेनी आउ लक्ष्मीधर बाबू जे अछंती तेणु गर्वित एवं कॉलेजर समस्त अध्यापक अध्यापिका वृंद एवं सथिया छात्र छात्री माने निमंत्रित अतिथि माने एवं गणमाध्यम समस्त प्रतिनिधि माने समस्त को हृदय कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची जे पवित्र माटी रे के पाद दबार सौभाग्य मते आपण माने देखचंती एवं प्रोफेसर स्माइल को स्पेशली धन्यवाद दउची जे एई भली आलोचना चक्र से आयोजन करचंती एवं एते जन लोकन को एकाठी हमको होबार गोटे सौभाग्य प्रदान करचंती। आज जो विषय वस्तुटी रही बेसी समय नहीं समय अतिक्रांत हमर आउरी अतिथि माने अछंती कहबा पे कि 5 मिनिट भितरे कहिबी जातीय शिक्षा नीति एवं विकसित भारत। शिक्षा नीति कहबा पूर्व शिक्षा ऊपर जेहेतु शिक्षा अध्यापिका जने शिक्षा ऊपर कहबा पे चाहे शिक्षा नीति बहुत किछि करा है आपण माने जानिथिले 1964 मसिया रे जेते बळे कोठारी कमिशन करा हेतला 1954 मसिया रे मुदालिया कमिशन हेतला 1986 रे मध्य गोटे शिक्षा नीति प्रणाम करा हेतला किंतु शिक्षा कहले ଆମେ कोन बुझुचे आदि पर्यंत हेले यूनेस्को रो कांसर गोटे कोटेशन लिखा है इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ नेशन देन डिस्ट्रॉय द सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऑफ दैट कंट्री। जदि गोटे राष्ट्र को आमे ध्वंस करबा पे चाहूछु ताहले आपनकर गुली गुड़ार आवश्यकता नहीं बम रो आवश्यकता नहीं तार शिक्षा नीति की नष्ट कर दियंतु से राष्ट्र आपे आपे नष्ट हो जिवो। तेणु ब्रिटिश सरकार छाड़ी देती जाइते भारत वर्ष को किंतु तांकर जो शिक्षा पद्धति थिला ताकू से इंप्लीमेंट कर दे गले हमर जो परंपरा थिला जो संस्कृति थिला जो शिक्षा व्यवस्था थिला ताकू संपूर्ण भाव ध्वंस कर दे गले। आपण माने समस्त जानि थिबे तक्षशिला नालंदा भलिया यूनिवर्सिटी जे विश्व रो छात्र छात्री को आकृष्ट करथला पाठ पढिबा पई ताकू निया लगे आनिथिला मास मास धरि कि लक्ष लक्ष बही जळि जाइथिला ए संस्कृति को ए शिक्षा को सब किछि नियारे गोडी जळिकरी पाउस कर दिया हेछि एवं आम मानक ऊपर गोटे पुरातन एवं आउट ऑफ फैशन जाको कहंती गोटे इंग्रेज शिक्षा
पद्धति को लदी दिया है कि जहां उद्देश्य था इंग्लिश मानकर किछि क्लरिकल लोक सृष्टि करिवे तांको काम रे ऑफिशियल काम रे सहायता करबा पे आमे आज सेही शिक्षा को ग्रहण करूचे जहां हम जीवन रे बहुत कम काम रे लागुछि सेथि पाई कि शिक्षा कहिले हमें कोन केवल साहित्य विज्ञान अंक आदि भीतर सीमित रहू शिक्षा केबे हेले आपण माने शिक्षा रे जेतु छात्र छात्री शिक्षा कहिले मानव संबळर विकास शिक्षा कहिले मानव चरित्रर गठन शिक्षा कहिले मनुष्यर व्यक्तित्वर विकास शिक्षा कहिले देश और राष्ट्रर गठन शिक्षा कहिले समाजर उन्नति शिक्षा होची सेही शिक्षा जे समाजर कल्याण पाई समाजर उन्नति पाई मनुष्यर कल्याण पाई मनुष्यर जीवन को उन्नत करिबारे सहायता करी सेही होची शिक्षा आमे वर्ष वर्ष धरि जो शिक्षा वर्तमान सुधा पाई आछे तादेर अनेक किछि लाकुना रहुची जोथि पई कि भारत सरकार आउ हमर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं आमर जो शिक्षा मंत्री अछंती वर्तमान श्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय मात्र से माने ताकर प्रतिष्ठा गोटे नवा शिक्षा नीति 2020 मसिया रे आरंभ हेतिला एवं एई शिक्षा नीति होची जे समस्त पूरा आमूलचूल परिवर्तन प्राथमिक शिक्षा का अंगनवाड़ी शिक्षा का लेकिन हायर एजुकेशन लेवल पर्यंत संपूर्ण भाव में जेमति आमूलचूल परिवर्तन हो से परिवर्तन कथा आपण समस्त जानती ताकू आलोचना करबा पई चाहिए आपे गोटे स्वतंत्र क्लास दरकार आलोचना करबा पई एवं सेही परिवर्तन एभली हवा दरकार जे भारतीय शिक्षा संस्कृति परंपरा को बेस करके हेतिबो भारतीयता जो থাকিबो आपण माने जानती आमे पढु इतिहास रे कहा कथा पढुचे बाबर हुमायूं अकबर शाहजहां ए मान को पढुचे किंतु जो माने हम राष्ट्र पई की देश पई की बलिदान दैछथि जे अवदान दैछथि प्रकृत शिक्षा क्षेत्र रे आमे पाणिनि को कथा पढुनु आमे बागभट्ट को कथा पढुनु आमे पातंजलि को कथा पढुनु आमे पढुचे का कथा प्रमोद बाबू कहउतले मार्कलेनिस कथा जे जणे इंग्रेज शासन रे हम की शिक्षा नीति प्रणाली कर जाइथे मार्कलेनिस करे मार्कले जणे इंग्रेज रो लोक थे आउ जणे थिले वुड्स बोली के जणे से कोन कले कि इंडिया रो आसी गले इंग्लैंड रे बसिले सेउटु आईनी शिक्षा कोन हो पढे ताको हम वुड्स डिस्पैच बोली कहू काई का इंग्लैंड डिस्पैच करले से इंडिया को ताको वुड्स डिस्पैच कहू आमे सेही शिक्षा नीति को पढुचे जो मानकर शिक्षा क्षेत्र रे किछि अवदान नाही सेमान को नारे में शिक्षा अनुष्ठान करिजे जावियर इंस्टीट्यूट ऑफ सो एंड सो भारत वर्ष रे किंतु जो माने प्रकृत हमर संस्कृति को अवदान करिसंती तार दैछंती से शिक्षा नीति को हमें भूली जाई जोथि पाई कि हमर मनुष्य माने आज ए जो नुआ जातीय शिक्षा नीति 2020 मसिया रे आरंभ करिसंती एवं से शिक्षा नीति रे आमूलचूल परिवर्तन आसीबो परीक्षा खान देकी स्ट्रक्चर रे मात्र परिवर्तन आसीबो एवं भारत को 2047 मसिया जेबे कि हमर भारत स्वाधीनतार 100 वर्ष पूर्ति हो सेही समय को गोटे विकसित भारत भाबरे देखिबा पई कि चाह ए भारत केमति विकसित होबे शिक्षा होय गोटे पावरफुल मीन्स एजुकेशन इज ए पावरफुल मीन्स ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सोशल चेंज शिक्षा होची गोटे माध्यम जहा द्वारा ए समाज रे परिवर्तन आसी परिबा आपण माने पढुथिबे सोशल चेंज सोशल एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी तेणु धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस में शिक्षा समाज रे परिवर्तन आए एवं से परिवर्तन कहा द्वारा आसीबो आपण मानक द्वारा आसीबो केमिति आसीबो आमे जदि हमर मूल संस्कृति परंपरा एवं मूल्यबोध वैल्यू जहा को कहउते तेबे जाय मन रखिबा ताकि जदि हम हमर जीवन में इंप्लीमेंट करिबा काम रे लगेबा तेबे जाय कि समाज रे परिवर्तन आसीबो आमे कोन करि छै कि बापा मां को छाडी कि मम्मी डैडी बोली डाकुचे आमे घरे चकुली पिठा आउ कोन मंडा पिठा लखाई कि आमे जे कोन खाउचे बर्गर पिज्जा और मोमो खाउचे जहां फल रे हमर आज एक प्रकार दुर्दशा एची तेणु ए जो शिक्षा नीति करा हेची आगे मम्मी डैडी को छाडी कि बापा मां बोली कि कहबा एवं भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा भारतीय भाषा मेडिकल इंजीनियरिंग पाखु आरंभ करी समस्त शिक्षा रे ओडिया भाषा रे आंचलिक भाषा रे समस्त बही करा दिबो एवं पढी भारत वर्ष को छाडी कि अन्य पृथ्वी रे 80% कंट्री को देखिबो सेमान रीजनल लैंग्वेज रे पाठ पढो जर्मन दिबो
जापान जीव जोठी जीव से ताको भाषा रे पाठ पढ़ंती से टेक्नोलॉजी रे केते डेवलप हमें कोन भाबू जे इंग्लिश रे कोनो बढ़िया कहिला से बहुत एजुकेटेड तार बहुत ज्ञान अछि किंतु हमर गोटे आदिवासी पिला जोटे गरीब पिला से इंग्लिश रे पाठ पढ़ी पारुनी कि कहि पारुनी तेणु ताको ता मातृभाषा रे तार रीजनल लैंग्वेज रे यदि हम शिक्षा देबा ताहले निश्चित भाବରେ से फल करि परिबो फल बुझि परिबो मो मातृभाषा रे मु केते यूज करि परिबो अन्य समिति केही करि परिबे नै हमर संस्कृति को आपण माने देखिथिबे कुंभ मेला को समस्त निज मोबाइल रे सोशल मीडिया 60 कोटी लोक आमे विकसित भारत कथा स्वप्न देखुते डिजिटल कुंभ बोली कि आमे कहिए केते डेवलप हेछि जो विकसित भारत कथा कहउछि एठु विकसित भारत रो गुरुद्वार स्थापन हेछि आपण माने देखिबे 60 कोटी लोक 45 दिन समय भीतर सारा पृथ्वी रो 120 टा राष्ट्र वासी कि एठी एकता देखैछथि सॉलिडारिटी देखैछथि यूनियननेस देखैछथि एटा होछि विकसित भारत रो स्वप्न एवं विकसित भारत रो स्वप्न होछि आपण मानकर उन्नति समाज रो उन्नति सब वर्ग रो उन्नति एवं विकसित भारत रो स्वप्न होछि ह्यूमन रिसोर्सेस रो डेवलपमेंट जेंडर इक्वालिटी समस्त महिला आपण माने देखुथिबे वर्तमान सरकार महिला को प्राधान्य दिया आदिवासी मान को प्राधान्य दिया कोन आदिवासी मान को प्राधान्य दिया द्रौपदी मुर्मू हमर सम्माननीय जे राष्ट्रपति से केबे चिंता करिथिले कि जे राष्ट्रपति आसन अलंकृत करिवे बोली किंतु आगे सम्मान देइछे नारी को सम्मान देइछे एवं गरीब आदिवासी को सम्मान देइछे ताको महामहिम राष्ट्रपति भाବରେ ଆମେ बसै पारे आज जे मुख्यमंत्री अछथि ओडिसा रे केबे आपण माने भाबिथिले कि जने आदिवासी लोक को ଆମେ मुख्यमंत्री भाବରେ देखि परिबा तेणु ए होजी विकसित भारत रो स्वप्न पूरा ग्रासरूट लेवल ठाकुर दिन मजुरिया पाखरे आरंभ करके टॉप पर्यंत सब लोकंकर जेतेबेले उन्नति देइ परिबो सेतेबेले जाई विकसित भारत रो स्वप्न साकार हेला बली आमे देखि परिबा हमर संस्कृति हमर परंपरा हमर जहाँ किछि रही कि ताकू हमको नेकरी चढ़िबा पे पड़िबा हमको विदेशी भाषा विदेशी संस्कृति विदेशी परंपरा छाड़िबा आपण मान देखिबे भारत को छाला पर अलग कंट्री रे बर्तमान गीता भागवत से माने पढुचंती आम पिला मान को गीता भागवत पचाले पाइबे सिनेमा की हिरोइन को ना पचाले निश्चय कहि दे परिबे किंतु रामायण रो चरित्र विषय कहले कहि परिबे आमे आम भीतर बडे प्रेजुडिस रही आमे पिला को नेकरी इंग्लिश मीडियम स्कूल रे पाठ पढिबा किंतु सरस्वती शिशु मंदिर को पढिबा पे मना करछे ओडिया मीडियम को पढिबा पे मना करछे जों हमर संस्कृति हमर जातीयता को नै एवं भारत वर्ष को विश्व रे विश्व गुरु भाव रे प्रतिष्ठित करबा होचे शिक्षा रो लक्ष्य जहा फल रे भारत वर्ष सारा विश्व रे आज तो गौरव आनी छी आनीबो मत सेति पई जे शिक्षा नीति रो प्रणयन एवं ए विकसित भारत रो स्वप्न एवं आपण माने होचती तार सूत्रधर तार बाहक आपण माने ए शिक्षा लोक को आगु नेबे पढेबे कारण आबे माने अस्तकामी सूर्य हमर दिन काल सकेছে आपण माने बर्तमाने उदय होचंती आपण माने हाथ रे जातिर उन्नति रो मशाल आपण माने आगु नेबे निश्चित भाबरे एवं विकसित भारत रो स्वप्न को साकार करिवे सार्थक करिवे वेदी कहि विदाय रो कारण आउ माने बहुत प्रकार जय जगन्नाथ जय बंदे उत्पल जय बहुत धन्यवाद मैडम मातृभूमि मातृभाषा रे गणता जाहुके जनमी नाही ताकु जदि ज्ञानी बनरे बनिना क्या रहिबे काहे सं गच्छध्वम सं पदध्वम सं गमनासि जानतम देव भागम यथा पूर्वे सं ज्ञानन उपासते थैंक यू सो मच हमरा भारतीय परंपरा पालन होइतरो नाउ इट इज वेरी टाइम to listen the core of felicitation and we are inviting esteemed chief speaker of today's occasion to deliver speech of address one of the dynamic youngest professors of India from our regional institute of education Bhubaneswar, Professor Lakshmandar Pehra sir, well known to everybody. So, namaskar, esteemed chief guest of this national conference, Honorable MLA of Bhanjanagar, my teacher, Professor Surekha Sundaris Mehmet, the principal of this institution, Professor Vimal Chandra Swaise, the local NEC chairperson, block chairperson, sarpans, the local sarpans and publisher, peace sir,
my seniors here, Professor Viksit Bharat sir, Professor Devendra Sethi sir, Professor Manoj Pradhan sir, all the delegates, students and faculty members, those who are present here. At first, I would like to congratulate the institution for organizing this seminar from 2 points of view. Firstly, the timing of the seminar. Why the timing of the seminar? Because last year, Government of Odisha implemented NEP 2020 in higher education, and this current year, NEP 2020 has been rolled out with regard to quality improvement of school education. Secondly, the audience and the members, those who are present here, when we see that in a conference, political people are there, sometimes some people think, so why political people are here? But from other point of view, when political people, 3 levels of people here, NSC, then Sarpans, local MLA, they are here, students are here, faculty members are here, journalists are here, all different groups are here. So probably this is the best situation where the implementation plan can be discussed properly. So in the morning when there was discussion was going on, Pramod Kushi sir, he was mentioning about this title, and the regional director Pani sir was also mentioning about the title. So firstly I will say that when we see about this particular title, so there is a linkage that first question comes, yes, policy is there. Surekha ma'am already presented, she is my teacher. So policy, we have many policies, and it is always said that we are good planner and probably bad implementer. And the Viksit Bharat, the vision, and education is one of the components, and education plays a significant role in affecting other components, whether it is industrial development, whether it is agricultural sector, whether other sectors, eradication of poverty, all the aspects, school education, technical education, vocational education, all will be playing a role in improving the quality in all these aspects. So when we see about NEP 2020, so all of us know it is a policy which a unique policy after so many years, which is visioning an equitable and vibrant knowledge society, and it aims at enhancing the quality of the nation, and as Surekha ma'am was saying, to promote the nation as a Vishwaguru. So when we say about this, so we can say that we have so many challenges in today's education, particularly school education. So if we will address all those challenges, so the vision of Viksit Bharat will be achieved. There is no double opinion here. So firstly, all of you will agree that in our school curriculum or teacher education curriculum, our student teacher friends are here. They sometimes also say that our syllabus is overloaded. So a lot is taught, a little is learned. A lot is taught because we have to teach less, but students should learn more. And the way we are pressurizing nowadays, the NEP 2020 is a document which clearly envisions how to minimize all those pressures among the students. So gone are the days when learning was joyful. Now, if I ask many of the students, a small child of preschool who has a big bag of 5 kg, 6 kg, the child is 16 kg, is taking a bag of 5 kg. So, apart from the bag, the pressures created by the parents, by the teachers, by others, all these are creating multiple challenges. And another problem which our NEP 2020 is addressing, that is, we talk about micro context. So,
when we talk about this institution, when we think about what should be taught near Bhanjanagar, our students should be learning about the India, Odisha, as well as the local context should be learned. But when the National Achievement Survey 2021, as well as 2017, the results say that the students, when the questions are asked regarding the neighborhood, when the question is asked, suppose Bhanjanagar student will be there, class 3, class 5, there will be 4 or 5 questions about Bhanjanagar, they cannot answer. They will answer more if the question is about other region. So how to contextualize education, how to give the prominence of local culture, this is vision in this NEP 2020. And friends, when we talk about our today's school education, NEP 2020 is talking about holistic report card. So rather than having grading, so it uses a term NEP 2020 after this Bharat has been constituted in NCERT. So they have developed 4 holistic progress card, one for foundation stage, one for preparatory, one for middle, one for secondary. There, rather than having scores and grades, students are graded in 3 levels. One is stream, mountain, and sky. Stream and mountain and sky. So this is this facility. This is evident in this particular Bharat document. So how to address the challenges of examination, this has been addressed in NEP 2020, and if it will be implemented properly, so we can say that the vision of Viksit Bharat can be achieved within the stipulated time period. And one of the major things when we talk about teacher education, this is a teacher education institution. Now there is so many diversities, complexities with regard to teacher education programs. In Odisha, for example, now 2 institutions they are running ITEC, IIT Bhubaneswar and MPC College Mayurbhanj. 2 institutions. 5 institutions are in the transit phase. They have applied for ITEC. 16 institutions are standalone institutions. They have this program. 5 institutions they are running B.Ed, M.Ed integrated programs. But the question comes, what should be the action plan when we are talking about implementation? As this is a teacher education institution, I am sure that in this seminar, some action points can be outlined which will be useful for the country as well as, okay. So, Viksit Bharat I was saying, and another thing I can say when we are talking about Viksit Bharat, India is a country which is a peculiar country. Why it is a peculiar country? Because in India, quantity you have to target, quality you have to target, equality you have to target. You cannot say that if you see about the number I was going through when the discussion was going on, we have more than 26 crore children in school, 26 crore school education students. We have more than 16 lakh schools, around figure, maybe there will be some changes. We have more than 1 crore teachers. When we are talking about Odisha, so I was collecting data. In the middle school, we have 20,844 schools. Secondary level, we have 12,214 schools. And total in school education, we have 61,693 schools as per the UDI's 23 data. And 3.36 lakhs teachers, roughly, they are there in the school education. Please see about this quantity. In 2017, I visited one of the countries in Seychelles, in Africa. That was one UNESCO program. So almost 250 participants were there from India. Only 3 people were there. So the president of the country, she was naming all the Anganwadi there preschool teachers. 70-80 teachers were there. In the meeting, she was calling by name. So when we see that a president of the country knows the name of the teachers, so we were wondering why, how. Then when we saw the number of population of the country, we found that it is 87,000. A country's population is 87,000. So look at the large number quantity of our country. We have 26 crore students. They have 87,000 population. In Bhanjanagar block, population may be more than 1.5 lakhs.
but there the whole content of proposition is this. So here my point is, there was a book written by J.P. Nayak, Equality, Quantity and Quality, the elusive triangle of Indian education. When we talk about school education, we cannot forget any one point. Quantity we have to target, gender equality we have to target, social group equality, education for SC, STs, minorities we have to target, and side by side, quality dimensions like quality infrastructure, quality teacher, quality time, quality monitoring by the person, all these must be taken together so that quality can be achieved. So here my point is, at a time, how we can address these three things so we can discuss more during our panel discussion. And all these things have been addressed when we say about NEP 2020, when it is talking about 5 pillars like access, quality, equity, affordability and accountability. When we say about implementation plan, the question comes, who is accountable? When we are talking about quality of school education, parents blame teachers in school, teachers blame parents, teachers of middle school blame the lower stage teachers, secondary teachers sometimes blame the middle school teachers, the students they are very good, sometimes they will blame both parents and teachers, sometimes also we blame the system. But the question comes, how will we fixing the accountability? When we are talking about implementation plan on 21st, 22nd and 23rd, in collaboration with NCRT, state government organized a 3-day workshop which was inaugurated by Honorable Chief Minister and Union Minister of Education. So almost 400 educationists from all over the country, they were there. So 3 days rigorous workshop was done on 10 dimensions like foundational literacy and numeracy, curtailing dropout rates, adult education, non-formal education, vocational and skill education, quality teacher education and capacity building program, similarly technology integration. In all these areas, some action points have been developed. So when we are talking about action points, we have to think about what should be the action point. We should not say that action point will be developed only at the national level or state level. What will be the local action points? What will be the role of the local sarpanch, local NEC chairman or local MLA or the minister? Rather than having a blame game, how all will collaborate for implementation of NEP 2020? This is a matter of discussion and this is also a point of appreciation, we can say. So, when we are talking about the implementation, so in all countries they have policies. When there will be a policy, there will be a curriculum framework. When there will be a curriculum framework, we develop syllabus. Based upon syllabus, we develop textbook. Based upon textbook and all these, we prepare teaching learning patterns. And one thing I will say here, please see this diagram, these pictures, the cover page I have taken from curriculum framework documents. My purpose of giving this example here is, always the curriculum framework of school education has linkage with teacher education curriculum framework. But one thing is here, all the years, please relate it, all the years will be finding linked with political changes. Whenever there is a political change, there is also change in curriculum. This is one of the important aspects. So when we are talking about this, I will not take more time. So all the implementation part, for example, I am posing some questions with regard to foundational literacy and numeracy. NEP 2020 says that there will be 3 years of preschooling. Bal-Batika 1, Bal-Batika 2, Bal-Batika 3. 3 to 4 is 2, 4 to 5 and 5 to 6. So Odisha government recently has recently introduced the Bal-Batika 3 at particularly it is implemented and already the guidelines, handbooks have been prepared. The issue is how there will be a collaboration between Women Child Development Department and
Education Department. NEP says that foundational education, preschool 1, preschool 2, preschool 3 should be the task of education ministry. But in Odisha, preschool 1, preschool 2 is under women and child development. How there will be collaboration? If there will be no collaboration, there will be overlapping of works. How it can be collaborated from the micro level, like Anganwadi functionaries, preschool teachers, and at the block level, at the district level, at the state level, at the national level. Secondly, when we are talking about vocational education, so it is found that mostly in vocational education, we have a negative tendency towards vocational education. In subjects, we treat some of the subjects primarily, and some subjects, those are vocational, parents, teachers, we treat them in a very less, we appreciate less to these particular subjects. Now, NEP 2020 has suggested that from class 6 onwards, there will be 10 bagless days. But when interpretation is made, many institutions, they say that the students will come to the school without bags. The bagless day doesn't mean that. It means that the local craft person, artist, local resource persons, the students can 10 days at least in a session after class 6. They will be interacting with them, gaining some indigenous knowledge and harvesting those knowledge for their development. So if our Pandit Sundaram Sarma Central Institute of Vocational Education, which is NCERT constituent, Bhopal, it has already developed the guidelines for 10 bagless days. So this can be implemented. Another issue is with regard to reform in pedagogy. So I am posing a question here. When National Achievement Survey 2021 was conducted, 2017 was conducted, it was found that class 3 students' performance is 61%. Class 5 it is coming to 58%. Class 8 it is coming to 54%. Class 10 it is coming to 48-49%. When the students are moving stage-wise, why the result is decreasing? Why the result is decreasing? But in NEET examination, 720 out of 720 percentage of students are securing. In CBSE examination, 400 out of 400 many students are scoring. But why the students, when they are asked some process-based question, practical question, application-based question, they are doing very poorly. Unless they are doing the practical-based questions perfectly, the vision of Viksit Bharat cannot be achieved. The one of the CEO of Microsoft, she was saying that the persons, those who are coming to us for interview, we found that almost more than half of them, they are not eligible, they don't have problem-solving skills. Almost 25% and more, those who are postgraduates, when they are reaching us, they don't have the requisite skills. So she was saying that we can appoint a matriculate if he or she has the requisite problem-solving skills. So by saying this, I am saying that what will be our action plan for pedagogy and assessment for particularly promoting this problem-solving skills. Should we ask the question the way we are asking in the classroom? Whether our textbook will frame only question, whatever is there in the textbook, because when the textbook questions are asked, students perform better. If the question is little deviated, the students say that it is out of syllabus. If you see the PISA program for students as international students assessment, all the questions are reflected. All the questions are reflected, so India's position was at the bottom. If the questions, even if sometimes students wonder which unit, which chapter, all these should be specified so that they will be answering in that way only. So, with regard to the recent initiatives, just like in the morning, Pramod sir was saying about POA, after NEP 2020, Sarthak 1 and Sarthak 2, two action documents have been prepared by NCERT and Ministry of Education. For action, for implementation, 50 hours continuous CPD program is developed
For Bal-Batika activity book Anand and Unmukh for this handbook for teachers of Bal-Batika, it is developed by NCT. NCT has developed National Professional Standards for Teachers handbook, National Mentoring Based handbook for quality improvement of teacher education. Similarly, the curriculum framework for teacher education is in the process, but a draft curriculum framework for integrated teacher education program has been developed in 22-23 by NCT. The Vidya Pravesh guideline for the students, those who are going to class 1 to bridge the knowledge, it has been developed. And one of the major suggestions of NEP 2020, all of us know, it talks about experiential learning and integration of arts and sports integrated education. We know that when in the games or sports period is there, when there is a theory class in the school, the students will go to the playground, they will find the shortest route. For example, class चलची mathematics ପରେ games period ଅଛି से केमती जाई सेठी पहुंची जिवे जଣା पड़िबो गोटे सेकेंड देई दौड़ी पहुंची जिवे games period सरीला पुणी आसीबे जब इंग्लिश क्लास अछि कि ओडिया क्लास अछि कि सोशल साइंस अछि they will find the longest route to reach the classroom. So this shows that all are interested for games and sports activities. What will happen if all these will be integrated in these activities? NCT has prepared Jadui Pitara. Odisha government recently has contextualized it and it is Jadu Pedi. And many times they have also initiated some activity, they have developed their local toys. So all these can be implemented. Some of the other initiatives I have listed here, but I expect that in this seminar, so another 2-3 hours that we discuss, we have to discuss at macro level how, what responsibilities can be fixed, how the activities will be implemented, what should be the time plan, what are the expected challenges, how the expected challenges can be compensated. All these things may be discussed in the seminar. So thank you very much for giving me an opportunity to interact here. Thank you very much. Thank you so much, sir, for a very elusive and illustrative discussion. Let hands be united. Let feet march in unison. Let India rise again. Thank you so much, sir, for your beautiful discussion. So now, time to listen our esteemed guest of honor, Prem Singh Ji, the Commission Pune Books, New Delhi and Commission Bachelor Service. Thank you, sir. Jai Jagannath. Good evening for all. One day national seminar, Dignitary, National Education Policy 2020, and the vision of Viksit Bharat. K.S.U.B कॉलेज और भांजानगर मैं आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ. नमस्कार. Distinguished guests, all the option and other dignitary of the time. I am thankful Honorable Principal Professor Vimal Charan Saiji, the dynamic of author and educated of India, for inviting me in the national seminar. Sir has written more than 30 books which he has published in the Kunal Books and Almi publication. New Delhi. Book he has released to today which published by Kunal Books and Almi publication, and I calculate as a team member of the inviting me the national seminar. All thankful to all. And this very today I am this very calculate. I am this my side. This year, sir, I am this especially and this is Delhi to Bhanjanagar. And मेरे पास कोई शब्द नहीं है
कि मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और थोड़ा दो शब्द आपने हिंदी में बोलूँगा क्योंकि टाइम में एक मेरे राइटर हैं जिनका 30 बुक्स मैं पब्लिश कर दिया इस सिर्फ 5 साल के अंदर और पूरे उड़ीसा के एजुकेशन में मेरी किताबें मतलब अभी चल रही है। तो मैं यही जानना चाहूँगा तो ये इस तरह से आगे भी मैं काम करता हूँ और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सभी को और ये इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देता और छोटा सा एक्चुअली देखते हैं जो बुक का रिलीज हुआ है दोनों बुक प्रोफेसर डिमोट्रियस वाइस है इज एसोसिएटेड विद NEP publications New Delhi Viksit on behalf of a star is going to be awarded to felicitated. These are the words written by Kunal Books and NEP publication for Professor Dignitary Wine sir. Professor Dignitary Wine is a national level professor in education and a renowned author. He has contributed substantially in the field of education. Professor Swain has received many awards because of his contribution in the field of education. Professor Dignitary Swain holds master's degree in history and education, gold medalist, MPhil and a PhD degree in education. He is a senior teacher educator and author and a research guide in the field of education. Professor Swain is working as principal in Dignitary Leadership Department of Education and K.S.U.B Education Bhanjanagar, Ganjam. He is the Dean of Education in Bharat University, Bharat. Professor Swain is the chairman of the DRC, SRC in Education and Board of Studies in Education in Bharat University, Bharat. He is a member of Academic Council of Bharat University, Bharat. He has 30 years of teaching and research experience. Professor Swain has in different national and international journals and literature. Professor Swain is the editor, author of 30 books on education published by Kunal Books and NEP Publications in New Delhi. Professor Swain has delivered lectures on different issues of education and different institutions of higher learning as an invited speaker. He has chaired presented papers in more than 100 states, national and international seminars. Professor Swain has successfully guided 10 TED scholars, 13 MPhil and 35 MA students for the base of education. He is a member of Subject Research Committee, Departmental Research Committee in Education in Utkal University, Bhubaneswar. Sri Ramchandra Bhanjanagar University, Baikada, Netai Subhash Chandra University, Jamshedpur, Jharkhand, and KEEP University, Bhubaneswar. Professor Swain is a member of governing body in 3 colleges of Hotel Management and Utkal University of Ganjam, Bhubaneswar. He is the member of editorial board, advisory board in 12 national journals on education. Professor Swain is the PhD examiner of different universities of India. He is associated with the academic activities of IGNO, UGC, XRDC, SCRT, Board of Secondary Education Odisha, All Odisha Education Society, All India Education Society and Education World Community. He is invited as an expert for discussion on educational issues in Doordarshan and other television channels. He was awarded by India Prime Awards Organization as India Top 100 Authors in 2002. He was conferred with 100 Honorable Personalities 2023 under Educationist category in India by Ganjam X Media. He received International Education Award 2023 from World Charity Welfare Foundation. Professor Swain has been awarded by London Book of Award Records 2024. He received International Achievement Award 2024, India Icon Award 2024, and International Pride Award 2024 because of his contribution in the field of education. Greetings from Kunal Books and NEP Publication for publishing 30 books occasion of national seminar. Thank you so much.
थैंक यू सर। वर्तमान समय आसी आज सभार आज जो मुख्य आकर्षण आमर मुख्य अतिथि ये माटीर ये उत्तरदायक ये माटीर संतान सन ऑफ द सॉइल और ऑनरेबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली प्रदीप नायक सर, यू आर वेलकम टू आवर दिस गैदरिंग। सर आपन स्वागत करछु, आपन छात्र धरछु प्लीज सर। आज भंजनगर पीडी कॉलेज तरफ जो सेमिनार का आयोजन करा पीडी कॉलेज प्रिंसिपाल स्वयं महोदय मंचासीन समस्त अतिथिवृंद मो सामने बसी समस्त शिक्षाप्रेमी एवं अनुष्ठान समस्त अध्यापक अध्यापिका सांबादिक बंधु मैंने पछे बसी आज अनुष्ठान छात्र छात्री और आगामी दिन सार और मैडम धन्यवाद देवी प्रथम प्रिंसिपाल महोदय को नुआ इतिहास सृष्टि कर विकसित भारत एवं 2020 जातीय शिक्षा ये हूँ आकाश और कया को चिलिकार माछ तथापि अतीत माँ मैंने बंधु माछ आनी घरे रोषे करुले तेंतुली कया दे सी हूँ आकाश कया और चिलिकार माछ। धन्यवाद देवी प्रिंसिपाल महोदय को किए कोटू अतिथि मैंने कार आम परिचय भी नाला आज गोटाए मंच बस जो टॉपिक दिया विकसित भारत एवं 2020 जातीय शिक्षा विकसित भारत आमे 2 मिनिट यदि आखि बंद कर विकसितता चिंता करवा दिन थिला वर्ष वर्ष धरी जो ब्रिटिश आमको शासन करुला से ब्रिटिश आम सरकार पाखे आज गोटे गोटे ठिया दिन थिला आम पाखे गोटे भल उड़ा जहाज नाला गुली बंदूक नाला भल इंजीनियर भी नथिले आम तो पिला दिने पाठ पढ़ुलु किए जाऊला अमेरिका चाकरी करने को किए जाऊला लंडन चाकरी करने को किए जाऊला रूसिया चाकरी करने को एवं से मैट्रिक रे जे भल नंबर पास करुले आम तो देखिए आज धन्यवाद देवी मोर प्रधानमंत्री को 2014 वर्ष ठारू प्रधानमंत्री हला परे जो लक्ष्य रखिछंती विकसित भारत एवं भारत को 2047 सुधा तो विश्व गुरु करबा ए लक्ष्य निश्चित भाव पूर्ण हम आपण मान उद्यम से उद्यम होछि जातीय शिक्षा नीति कारण देशर मुख्य मेरुदंड होछि शिक्षक एवं शिक्षा नीति जो पिला माने आदर्श शिक्षक नथिबे आदर्श पिला नथिबे ताले से अनुष्ठान के से अंचल रे कौन से डेवलप हो पारिबो हमें बहुत जगह देखिछे बुढ़ा बापा माँ को निर्यातना दिया जाउची যৌতুক নারে नुआ बहु को निर्यातना दिया जाउची एवं भाई भाई भितरे संपत्ति पाई हड़ा मारा होचे आकु दर करला
ଆଉ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି। 2020 ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଲାଗୁ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହୋଇନଥିଲା। ଏଭଳି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ବିଦେଶରେ ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜାପାନ କୁହନ୍ତୁ, ଜର୍ମାନୀ କୁହନ୍ତୁ, ରାସିଆ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେରିକା କୁହନ୍ତୁ, ଚୀନ କୁହନ୍ତୁ, ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଗକୁ। କାରଣ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ମୁଁ ଜଣେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମୋତେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଛଡ଼ା ଯଦି ଭୂଗୋଳ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ମୁଁ ଯଦି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଛଡ଼ା ମୋତେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଚାରିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଏଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବିଭାଗ ଉପରେ ପଚାରିବେ ସେ ପିଲା ଅନର୍ଗଳ ତା ଉପରେ ଭାବି କରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି। ଖାଲି ସେତିକି ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ସାର୍ ମ୍ୟାଡାମ କହୁଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ କଥା, ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚମକଉଛି ତାର ସୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ତାର ଡିଫେନ୍ସକୁ ନେଇ। ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୂଚୀଟିଏ ମଧ୍ୟ କିଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅତୀତରେ ଦେଖିଛେ ସୂଚୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବାହାରୁ କିଣୁଛେ। ଆମେ ଦୋକାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛେ, ଭାଇ କୋଉ କମ୍ପାନୀ? ମେଡ୍ ଇନ୍ ଜାପାନ। ତ କେତେ ତଳେ ଥିଲେ। ବିକଶିତ ଭାରତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ହେଲା ପରେ 2047 କି ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଜାପାନ ବାହାରିବନି କି ମେଡ୍ ଇନ୍ ଆମେରିକା ବାହାରିବନି କି ମେଡ୍ ଇନ୍ ଚାଇନା ବାହାରିବନି, ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଏ ହେଉଛି ବିକଶିତ ଭାରତ। ସେଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ଏଭଳି ଭାବେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଡାକିକି ଠିଆ କରାଇବେ, ଅନର୍ଗଳ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ଅନର୍ଗଳ ବାନ୍ତି କରିବେ। ଆପଣ ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କହିବେ, ଅଗାଢ଼ ଜ୍ଞାନ ତା ପାଖରେ ଥିବ। ଏବଂ ଡିଫେନ୍ସ କଥା କହିବେ, ସେ ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି। କୌଣସି ପିଲା এই আদর্শে আসলে চোরি ডকায়ত রাহাজানিরে জীবনী এবং ঘরে মধ্যে বাবা মাকে কি ভাই ভৌণীকে কৌশি টর্চর করিবার ব্যবস্থা নেই। তার মূল কারণ হল সংস্কার। আজ আম পাখে সংস্কার অভাব যেতে প্রকার আমি ছোট ছোট কাম আমি করিয়া আগ্রহ হচ্ছে, কিন্তু যোটি সংস্কার হয়ে গেলা, যে পিলা সংস্কারিত হেলা, जो परिवार में संस्कारित अछंती, देखिए कौन सी प्रकार अप्रीतिकर परिस्थिति से परिवार एवं जातीय शिक्षानीति उपरे मोर प्रधानमंत्री बड़ गुरुत्व देते महिला मान कथार अच्छी घरे जदि गोटे नारी पाठई है से निश्चित भाव चिंता कर मोर परिवार 5टी जाक लोक शिक्षित हो, किंतु बापा जड़े शिक्षित होती जड़े ही शिक्षित रही से चाकरी पाई खाली पैसा परिवार पोषा कथा चिंता कर, किंतु जड़े नारी जब शिक्षित होती निश्चित भाव चिंता कर मो पिला भल पाठ पढ़ू, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ये चिंता कर। ये माटी कवि सम्राट उपेन्द्र भगनाथ, ये माटी ओडिशा प्रसिद्ध जड़े विराट फ्रीडम फाइटर माटी, जहाँ को आज कवि सम्राट उपेन्द्र भंजनगर जो काव्य कथार अच्छी गाँ कन्या सिंगाणी नाटी भली आम बहुत पक्ष रही। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज किए आज अमेरिकार
कवि मैंने कल्चर कर गोटे कथा को तार 10टा भावार्थ। आज सारा विश्व उपेंद्र भंजनकर काव्य को चर्चा माध्यम सारा विश्व आज लोकार्पित करने भारत सरकार पूरा तत्व एवं आउ किए बरपुत्र वीर चक्रा विषय तार जो युद्ध कौशल आज भी कौन सी पृथ्वीर सेना बाहिनी पाखे से कौशल ना दीर्घ सुदीर्घ कलाहांडी ठार आरंभ कर पूरी पर्यंत 500 किलोमीटर व्यासार्थ भितर तार साम्राज्य विस्तार करते। मो गाँ पाखे जो घाटी अच्छी से घाटीर ना चकरा घाटी से चकरा घाटीर माँ ठाकुराणी को पूजा करी ब्रिटिश विरुद्ध जो युद्ध संग्राम चलते केतल बाघ ऊपर जाई इंग्रेज को मारुले केतल भालू ऊपर जाई इंग्रेज मारुले ये होती साधना बल से साधना आज मत लुकायित अच्छे। तेणु आज विधायक दायित्व दुई जन चेयरमैन को नहीं एनएसओ चेयरमैन सान भाई उपबाबू ब्लॉक चेयरमैन सान भाई हरिसभा नायक को नहीं भंजनगर जो विकास सपन देखी से भितर चक्रा घाटर डेभलप 5 कोटी टंका अनुदान दिया एवं तार कार्यक्रम भी आरंभ हो सारी आउ मासे 2 मास पर जीवे चक्रा घाटर भौगोलिक मानचित्र को बदल दो एवं मन पकड़े चक्रा विषय किए कौन थिला युद्ध परंपरा ठीक से लुकायित अवस्था रही जाइवा कवि मान सम्राट उपेंद्र भंजन को सर्वभारतीय स्तर सर्वभारतीय स्तर में लोकार्पण करने जो विराट मानचित्र को लक्ष्य रखीचु ताकू आगामी दिन में निश्चित भाव मन पकड़ आपण मैंने भंजनगर एक राजनीतिक नेता मैंने अच्छा अहर चेष्टा कर भंजनगर विकास बंधुगण आपण उपदेश नापी आसीचु एवं किसी शिखार व्यवस्था अच्छी आसला समय मु अतिथि मान अनुरोध करी आपण मैंने भल वक्तृत्व देवे आम शिखु कारण लंबरू बाड़ी होची कांबड़ कांबड़ आम पाखे बुद्धि ना आम पाखे ज्ञान ना किंतु अच्छी सुसंपर्क रखिवार व्यवस्था कि शिखार भी आशा रखुच्छे कौन से क्षेत्र में केवे कहीं कहबेनि विधायक गर्व करथिले केवे कहीं कहबेनि एनएससी चेयरमैन की ब्लॉक चेयरमैन गर्व करू आम दुआर 24 घंटा खोला जार कहीं नहीं भंजनगर रे तापे आम तेज रही ये लक्ष्य नहीं राजनीतिक जीवन आरंभ कर बंधुगण जा हो धन्यवाद देव प्रिंसिपाल महोदय को आकाशर प्रेम को चिड़िकार माछ विकसित भारत और जातीय शिक्षा नीति गोटे दक्षिण मेरु आ गोटे उत्तर धन्यवाद दूची 2-3 दिन को समय माने विषय वक्तव्य शेष करछि एवं प्रिंसिपाल महोदय को अनुरोध भी करछि ये अनुष्ठान को जे करथिले स्वर्गत सोमनाथ रथम को तांकर प्रतिमूर्ति करबा आज वर्क्स डिपार्टमेंट को निर्देश भी दे सारी अति शीघ्र सोमनाथ रथम गोटे प्रतिमूर्ति करबा कारण ये अनुष्ठान एठी हेबार नथिला ये हेबार दिला बिडी कर माने फुलवाण रे बहु ज्ञानी गुणी ज्ञानी प्रतिभार व्यक्ति स्वर्गत सोमनाथ रथ से राज्य सरकार पाखे गोटे दाबी उपस्थापन कलु जे आज्ञा ये हेबा आवश्यक फुलवाणी की मो गाँ रोड लगी तेणु फुलवाणी पिला पढ़ी पारे से शिक्षा मंत्री को बुझे आज ये अनुष्ठान बहु बाहर छात्र छात्री आज देखी पार्छु मो गाँव आज बस पाठ पढ़ु
ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀ ଦେବୀ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖିବେ କଲେଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡି କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଟାକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଁ ରଖିଛି ବିଡି କଲେଜ ଏବଂ ଭଞ୍ଜନଗର କଲେଜ। ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ତ ଅନୁରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ 12 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଭଞ୍ଜନଗର ବିକାଶ। ସେଥିପାଇଁ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ କାମନା କରି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ। ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଯୁକ୍ତ ହେଉ ଶିକ୍ଷାର ମହାକୁମ୍ଭରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ। ଏଟା ମିନି ଓଡ଼ିଶା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା। मनुष्य जीवन नहीं केवल वर्ष मास दिन दंड कर्म चेतर कर्मकातर जीवन मानदंड दिल में जज्बा और वटे पर मुस्कान हो पसीना मेहनत का और कदमों में आसमान हो कुछ और तमन्ना नहीं है मेरे दिल में बस जैसा चाहता हूँ वैसा ही मेरा जहां हूँ ऐसा ही मेरा जहां रब फसला वो मंजिल भी आएगा जैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा खपकर ना बैठ वो मंजिल मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। थैंक यू सो मच। नाउ टाइम टू गिव formal vote of thanks. I would like to request the Vice Secretary Dr. Satyavati Master to give vote of thanks. A very warm and graceful afternoon to one and all present over here. Respected Principal and Convener of the seminar, respected Chief Guest and all honorable dignitaries honored of the dais, respected participants and my lovely student lecturers from K.S.U.B. It is my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of those personalities who really worked hard to make this event possible. On behalf of K.S.U.B family members, I extend a hearty vote of thanks to our Chief Guest, Sri Kodinno Kumar Naik sir, Honorable MLA Bhanjanagar, who spared his time in spite of his busy schedule to grace this memorable occasion and also to inaugurate our hostel building. Today, we had an opportunity to hear your thoughts and we surely encourage all the participants present over here. Thank you, sir. Thank you very much. I also want to thank our chief speaker, Professor L.D. sir, for accepting our request to join with us, and you truly made this day enlightening for us. Your deep and intellectual way of imparting knowledge has added to glory of this event. Thank you, sir. Thank you very much. I also extend my thanks to Dr. Pramod Kumar sir, who is after now ADM Chhatrapur, for giving his valuable time from his busy schedule. His love and affection towards this institution will be remembered forever. I am conveying my heartfelt gratitude to Dr. Siddharth Shankar Padhi sir, the Director of Education, for directing us in the smooth conduction of the seminar. I am also grateful to Professor S.S. Swaiman for giving her valuable time and also sharing her ideas with us. Thank you, ma'am. Thank you very much. I also give my vote of thanks to Prem Singh Bis sir, publisher of Kunal Books and NEP Books, who accepted our request to join with us and also released 2 books of our last seminar, that is integrating Indian knowledge system into higher education to transform India. We all the organizing committee members on behalf of K.S.U.B family, also all the K.S.U.B family members, really grateful to you for your hard work since last month to publish our books. Thank you, sir. Thank you very much. I also would like to give thanks from my bottom of my heart to all the honorable dignitaries present over here for giving your valuable time and also enlightened thoughts about the seminar. Without your presence, this seminar never be successful. I am also thankful to Chairman LSC, Gopabandhu Mahapatra sir, Block Chairman Sri Maheshwar Naik sir, and also Sarpanch Lal Singh, Sri Sevarat Sao sir, for giving your valuable time from your busy schedule to inaugurate our hostel building and also sharing your thoughts regarding the national center. Thank you, sir. Thank you very much.
I am also thankful to Professor K.S.U.B sir, Devendra Kumar Shetty sir, Professor Viksit Bharat sir, and all the panelists for joining us, with us in spite of the busy schedule. And also, I follow tell one Professor Radhalakshmi madam. He has joined in online mode. Okay, those is after now. Thank you very much. Now is the time to give vote of thanks to our dynamic, renowned. You can tell any attendee because there is no word to tell him. Without his encouragement, without his dedication, without his work, this seminar never be possible. Never be possible. Sir, without your encouragement, this mega event never be possible. You have really worked hard and also encouraged all the team members for successful organization of the seminar. Thank you, sir. Thank you very much. I am also thankful to all the coordinators, Dr. Dignitary sir. You already observed his activities, and also Dr. Ranjan Kumar Naik sir and also Dr. Pramod Kumar Das sir for their sincere efforts since last month for the successful organization of this program. Thank you all. Thank you very much. A sincere thanks to all the media personnel for your excellent coverage. We truly appreciate your time and effort in highlighting this event. I am also thankful to all the proactive and dedicated colleagues for their hard work since last week. And also, I would like to give a special thanks to our non-teaching staff members, demonstrators, L.B. Godo sir, for his hard work and dedication in inaugurating the hostel building and also for seminar. He has worked for last month for inauguration building. Now, this is the time to give vote of thanks to all the participants who have joined both online and offline mode. Without your participation of this program never be successful. Thank you all the participants. Now, my sincere thanks goes to all my lovable student teachers, those who have really worked hard for successful education of this seminar. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you all. Jai Jagannath. वर्तमान प्रेसिडेंट आदेश अनुसार हम सभा सांग होइछि धन्यवाद आमर तार लॉन्च पे जिबा कळया लॉन्च होबा तो समस्त बंधु कळया लॉन्च होस्ताछि समस्त पार्टिसिपेंट डेलीगेट्स डिग्निटरी प्लीज बळबन जिबा लॉन्च करे ए टाइम थी थाकिरे पुणी आमे एकत्रित होबा पैनल डिस्कशन होबा ऑफलाइन प्रेजेंटेशन पाई जे थाकिरे थैंक यू